games as well. But as you rightly mentioned, the reason behind playing FIFA is these three things, right? Peer-to-peer, playing with your favorite team, and playing online. This is what is the cornerstone of the concept of sports chain as well, right? Exactly. That's the reason why I asked you guys this question, that are you guys playing an online game rather than pitching everyone? This is something, which I wanted to understand. So, when will your project be live? If you can just give an outlook on. So right now, what we have done is our sign-up activity is already live. So you can go to fans.sportschain.com and do sign up and win up to 400 SPN tokens, right? This is where we have started a sign-up and we have received more than 500 sign-ups till date. But from a roadmap standpoint, July is the date where we want to launch a beta app. When I say beta app, what we will be doing there is, we'll be integrating stick cricket type of games from a gamification, and then we'll be able to launch fan tokens of our partner teams from the month of August onwards. This is where we exactly are from a technology roadmap standpoint. All right. So since we are talking about August, and what is the kind of approach your company has taken toward this project? Since August, it's like hardly 2 months are remaining. So what is the main objective behind this? Main objective behind this is, frankly, we want to prove to the global market that we can do this in Asia. If you remember in the early part of the conversation, Siddharth said 57 fan tokens were launched, not even one in Asia, or not even one from Asia. So you want to prove that yes, this is also going to work in India. We will build an India community, and the objective is to showcase that these teams that we are partnering with, उनका सिर्फ एक source of revenue नहीं है, match day tickets या sponsorship etc. Monetizing their fans, we want to prove that in India, and this will be one of the first times that will happen in the Indian and Asian market that a professional team is being able to monetize their fans at this scale. So Siddharth, since we are talking about monetization of fans going forward as well, so what are the fundraising options you have explored, and what is the way forward in terms of fundraising as far as the business is concerned? If you can just highlight that. So from a Web2 project, the fundraising is actually a little different, right? Or it generally happens from a Web2 arena standpoint as well as a Web3. So what we have done till date is we have done token sale of our SPN, which is expected to launch in the month of July, where we will be doing our public sale by doing an IEO on various global exchanges as well. So we are currently in talks. So once that talks are fruitful, we will be launching our SPN where early users will be able to come, participate, buy it, and with the help of SPN token, they will be engaging on a platform. Fantastic. That is one part of it. So we have already closed the seed round as well as early backing round. Approximately, we raised around $800,000. Couple of PRs are already there on our website. The name of investors are already out. You can definitely view that. But right now, we are in an equity fundraising as well, where we plan to raise another $1.2 to $3 million. The whole idea of raising this money is twofold. One, we want to expand into Asia market by doing sporting team partnership. The money would be used there. The second most important is user acquisition, marketing. The large amount of money would be spent there because we want to have at least 5,000 to 25,000 users onboarded when we launch a particular platform. So at least we can show or have large amount of daily active users, create stickiness on the platform, and then take it forward. So user engagement and acquisition is the big question as far as the company is concerned. बहुत खर्चा भी होता है इसमें. Correct. So उसको tackle करने का क्या आपने strategy बनाया है? So there is no perfect strategy to build a community. It is to be done in multiple ways and multiple routes are there. One of the important ways to do it is actually utilize our team partnerships. They themselves, you take any kabaddi team on an average, they have about 300 to 500,000 fans. That is one way to start doing that. So that's how you kind of build the community, introduce that all together. And then what we are also doing is we're working with a lot of fan groups, such as, Bharat Army, as you know, that's for the Indian cricket team. Multiple fan groups are there. So work with them to get their, users on board as well. And then also market this very vastly to the crypto community in India. So crypto community in India में definitely 10 में से 5 तो कोई sport के fan होंगे ही, and they will see that as a good proposition to kind of move away from traditional the investments that they've done on layer 2 application etc. How many of them would have come across a sports related kind of a project coming through? So I believe there are 2-3 ways to do this, and we've already started inculcating these methods. So it's not a set formula, but these 3 approaches are something that we've already begun and started witnessing the results of that on our Telegram group, which is now crossed 9,000 people. Our aim was 5 to 25,000, but now 9,000 तो हम already हो चुके हैं.
and Discord as well. So these are some 3 approaches that we have already started taking. All right, 3 approaches: fan building, community is something which is more important going forward as well. There are a lot of projects in the crypto ecosystem are only surviving because of the community. So one last question before we let you guys go is what's the take? What's your opinion or what's your suggestion to all the fans which are watching this interaction on Crypto TV? What's your view as far as the entire sector is concerned? What's the way forward and क्या बेस्ट आने वाला है उनके लिए गोइंग फॉरवर्ड? बहुत कुछ आने वाला है आपके लिए, बिकॉज हम खुद, आई एम नॉट द फाउंडर ऑफ दैट कंपनी, आई एम टॉकिंग फ्रॉम अ फैन perspective as well, right? We started Sports Chain because we were sports fan. We saw there are large amount of gaps. हम अपना time, energy, effort डालते हैं. We should be very closely knit with our favorite teams. We should be able to participate in their financial upside potential as well. This is where data is king concept was missing in sports world. We are bringing that data is king and user is king concept through Sports Chain, where you will be able to not only buy tokens, meet your favorite star, but play games, spend money, spend effort, spend time, and you will be able to reap financial benefits as well. So obviously this is the casual game. How are we going to change from a sporting standpoint as well? Vinayak, a quick view, last comments on that. Very simple. Guys, don't stay on the sideline or other side of the boundary. Please step in through Sports Chain and you will really understand why you should be participating in a project like this, because for a very long time fans have been on the other side of the fence. It's time to jump over on this side of the fence and really experience what it means to be a fan as an Asian fan base. So jump over on this side. That's the word coming in from Vinayak. Thank you so much, Vinayak, for being part of the show, and you gave a very broader perspective as far as fans are concerned. Thank you so much, Siddharth, for giving a broader outlook as far as the company plans and projects going forward are concerned. Thank you so much for watching this special segment on Digitally Unplugged. This is Manoj Dara signing off. Thank you. Ladies and gentlemen, welcome to Crazy Coins with Karnal. Today's coin is Phantom. It is the talk of the town. It's going ballistic on social media. It is changing the way people are exchanging money because it solves the ledger distribution problem. Highlight is it has given a crazy 12,000% in 1 year. 1,000% is 10x, 10,000% is 100x. You have 12,000 bucks today. It is the Ethereum killer. If Ethereum is one decentralized network, FTM is a network of decentralized network. That's crazy. It's undervalued than any of Ethereum's killers, which means Ethereum valued at $335 billion. FTM is only $7.5 billion. So now the real question is, will it kill its Ethereum killers? And only time will tell. Until then, stay tuned for next week till I bring you more Crazy Coins with Karnal. Hello to all you lovely people. You're watching Crypto TV, India's first 24/7 streaming crypto channel. I'm Vinita Chatterjee, leading you into the world of digital currencies. And here are the headlines. Three Arrows Capital defaults on $660 million loan. Bitcoin Ether falter amid mounting defaults. Ethereum lending protocol hit with $3.8 million exploit, recovers 50%. Digital assets investments saw record outflows last week. Over 400 crypto ads violated guidelines, says ASCI.
New York NFT leaves attendees infected with COVID-19. Australian crypto trading firm Banxa to lay off nearly a third of its staff. Madhavan joins NFT bandwagon with Rocketry NFT series. Now let's look at today's top trending stories in details. Crypto broker Voyager Digital said in a press release that one of its units had issued hedge fund Three Arrows Capital with a default notice for its inability to repay a loan of 15,250 bitcoins and $350 million in USDC worth roughly $660 million. Voyager had earlier this month flagged a potential default by 3AC. It now intends to pursue recovery of the funds through legal action. The default of 3AC on the $660 million loan reflects the hedge fund's stressed finances. A sharp drop in the value of Lido staked Ethereum, or STETH, which 3AC had used extensively as collateral, exposed the firm to multiple margin calls, causing it to burn through its funds. 3AC is considering several options for dealing with its insolvency, including asset sales and bailout talks. The company was seen selling off several of its tokens, most likely to meet margin calls. Voyager is likely to be the first of the many firms in pursuing recovery measures against 3AC. It is unclear as to what extent 3AC's debt exposure is. Bitcoin and Ethereum, two of the biggest cryptocurrency coins, fell on Monday, decoupling from the performance of stocks as mounting defaults by crypto lenders forced investors to shun digital assets. Crypto brokerage Voyager Digital earlier in the day issued a notice of default to Three Arrows Capital after the hedge fund failed to make the required payments on its loan of 15,250 bitcoins and $350 million in USDC. Voyager also announced it has drawn down $75 million of emergency $200 million cash and USDC credit line provided by Alameda Ventures. That facility included a 15,000 Bitcoin revolver. Grim outlook for digital assets also weighed on investor sentiment. Goldman Sachs earlier today cut crypto exchange Coinbase's ratings to sell from neutral owing to continued fall in crypto prices and the ensuing fall in industry activity levels. US stock futures inched higher, pointing to major indexes extending gains that have come amid milder expectations for Federal Reserve interest rate increases. US stock futures had registered larger gains earlier in the session, but the rises softened after the data showed that durable goods orders for May had risen more than expected. Futures for the S&P 500 added 0.2% on Monday, while futures for Dow Jones Industrial Average gained 0.1%. Contracts for the technology-focused Nasdaq 100 edged up 0.3%. Bitcoin was recently seen trading at around $21,100, down over 1% in the past 24 hours. Ether traded around $1,211, down by over 2% in a similar time span. Xcarnival, an Ethereum-based protocol that acts as a lending aggregator for NFTs, has recovered 50% of the $3.8 million lost in an exploit. A hacker exploited a smart contract flaw that allowed a pledged asset to also be used as a collateral, in this case, a Bored Ape Yacht Club non-fungible token. The hacker has accepted a bounty of 1,500 Ether worth $1.85 million in exchange for the return of the remaining 1,467 Ethers worth $1.8 million, and the Xcarnival team not pursuing legal action. Xcarnival negotiated a return of 50% of stolen Ether. Etherscan transactions show that the hacker has already sent 1,467 Ethers to the address shared by the Xcarnival team. Xcarnival proactively informed users about the hack while temporarily suspending a portion of its services to counter the attack. The Xcarnival smart contract has also been suspended, while
all deposit and borrowing actions are temporarily not supported. Digital asset investment products saw outflows totaling $423 million since last week, the largest since records. However, the outflows represented only 1.2% of assets under management, lower than the record occurred during the bear market in February 2018, where outflows represented 1.6% of AUM. Regionally, the outflows were almost solely from Canadian exchanges and one specific provider. Stripping out the $423 million outflows reveal that the other providers saw aggregate inflows totaling $70 million, highlighting highly polarized sentiment amongst digital asset investors. The outflows were solely focused on Bitcoin, which saw net outflows for the week totaling $453 million, erasing almost all inflows year to date and leaving total Bitcoin AUM at $24.5 billion, the lowest point since the beginning of 2021. Short Bitcoin saw inflows totaling $15 million due to the launch of the first US-based short investment product last week, while older short investment products saw outflows. Ethereum saw inflows totaling $11 million, the first following 11 consecutive weeks of outflows. The Advertising Standards Council of India, or ASCI, has said that more than 400 advertisements pertaining to cryptocurrencies by digital influencers on different social media platforms had violated their guidelines in the first 5 months of 2022. Between January and May 2022, ASCI received 453 complaints. Out of them, 419 were found to violate one or more crypto or influencer criteria, with the majority of complaints being made against social media influencers. The guidelines, which kicked on April 1st, mandated all VDA products and services to carry the disclaimer, "Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions." ASCI is a self-regulatory body and its guidelines are not legally binding. In case of a breach, the standards body publishes the names of those who have not adhered to the guidelines and escalates cases to the relevant government regulator. Well, those were the top trending stories of this hour. Keep watching Crypto TV, India's first 24/7 streaming crypto channel. I'm Vinita Chatterjee, signing off. Hello and welcome to the Coin Monitor. This is Manoj Dara. So today, Bitcoin was holding over $21,000 mark and the global cryptocurrency market traded mixed as investors began to think about second quarter earnings and as world shares extended their bounce on Monday. Building on Friday's strong Wall Street close and as off-peak oil prices helped sentiment improve and temper fears of prolonged inflation. So, market participants have shifted their focus to the company's performance, which will be monitored by the Q2 results. So, that will underline the economic impact of Federal Reserve's tightening and indicate whether investors should be cautious with their spending on riskier assets like cryptocurrencies. So, in today's trade, cryptocurrency market was trading 0.8% lower in a tight range as International Monetary Fund expects the US economy to narrowly avoid recession this year
and the next, following the rollout of the Federal Reserve's hawkish policy to curb inflation. That's what the market analysts are saying. So investors hope, there is also a big hope as far as oil prices are concerned, that they will slide from a 3-month peak hit earlier in June, and that could ease pricing pressure and allow US Federal Reserves to tighten policy less aggressively. That's what they are expecting, and reducing the risk of the economic recession. That's what the broader market expectations are. So however, crypto investors are still worried over the consequence of the crypto winter, a common term used for the bear market in digital assets, after Celsius prepare for a bankruptcy and as crypto hedge fund Three Arrow Capital faces risk of default. So the Wall Street Journal has reported on Friday that Celsius Network LLC has hired restructuring experts and to advise on a potential bankruptcy filing. So while CoinDesk reports that the Goldman Sachs plans to raise $2 billion from investors to buy Celsius digital assets and Bitcoin. So the world's biggest cryptocurrency was trading lower by 0.7% and was trading at $21,350, and Ethereum fell by 2.7% and was trading at $1,220. IC15 index of cryptocurrency was down by 1.6% and was trading at 28,801 points. On my left, Binance BNB was down 1.3% and was trading at $238. Polygon Matic fell 4.9% and was trading at $0.58, having gained 43% in the last 7 days. Solana Sol is down by 2.5% and was trading at $40.5. Ripple's XRP token traded at $0.36, down 2%. Cardano's ADA token was down by 3% to trade at $0.50. Cardano price seems to be preparing for a massive gain. That's what the analysts are saying, as Vasil Hart-Folk has taken one step closer to become a reality. That's what the market participants are also opined, that a recent tweet thread of IOHK, the developer behind Cardano, which has announced the launch of Cardano's node of 1.3.0 on June 25th. And that's what driving the prices higher, although the coin is down. So Avalanche FX was trading at $20.9 at 1.9% lower. Shiba Inu was down 4.2%. So Polkadot was down by 2.7% to trade at $8.1. So last coin on the list is Doge, which is trading higher. The popular meme coin is up by 5.4% and was trading at $0.076. So Doge prices showed a strong rally after Tesla's CEO Elon Musk has said that his support for the Dogecoin and his actually tweets have actually taken the prices higher. So the price soared by more than 35% in a week on the back of strong buying. So Doge prices skyrocketed from $0.051 to $0.077. So let's get a technical view from our technical expert, Mr. Milind Vaishnav. Milind, welcome on Crypto TV. Very good evening to everyone, and many thanks for having me here. Ethereum marked its high close to 4,800 in November 2021, and since that it has lost close to 78% of its value, when it marked a low well below 900 levels in the middle of this month. Broadly speaking, we see that the index, the crypto remains in a largely or secularly downward falling channel, and right now it has bounced back after testing lows close to 900. So right now it continues to be in the downward sloping channel, and whatever bounce back or the technical pullbacks that we see would be the upsides or the up moves within a broad falling trend. Similar trade setups are seen in Bitcoin. It's just like Ethereum, Bitcoin too has lost bulk of its value after marking its high near 70,000 in the last quarter of the previous year. Since then, it has performed relatively stronger than Ethereum as of now, but right now over the past couple of months it has remained under a downward sloping channel. All the up moves that we see will find resistance at this falling trend line. Trying to take a look at the broader picture, it has a picture similar to that of Ethereum, wherein it has violated a major support line near 29 to 30,000 zone, and all pullbacks will find resistance at this level, because any support that once gets violated will act as a resistance in future.
In the same breath, just like Ethereum, Bitcoin too has tried to mark its bottom after near 17,500 levels. And so long as 17,500 levels stay protected, there are all possibilities that Bitcoin may see buying with each dips. I mean, all dips will get bought into the Bitcoin. IC index draws a similar picture, because it's quite obvious that since it is tracking the cryptos, it will also have the shape and size and structure of the major cryptos. And in the similar way, this IC15 index is in the downward falling channel. So whatever up move that we will see will find resistance at this falling trend line. In the event of any up move, we see IC15 index finding its resistance anywhere between 33,000 to 34,200 levels. Similarly, on lines of the other major cryptos, on the weekly chart as well, this index has violated a major support near between 40,000 and 41,000 range. And all up moves will find resistance at this point, because again, when this support has got violated, we can expect this to act as a resistance. But in the same breath, since it is in the oversold territory, we feel that all so long as 22,800 levels for IC15 are protected, we will find the index inching higher with each downside. So it would be important to see that both the cryptos, mainly Bitcoin and Ethereum, along with the IT index, will need to move out of this falling trend line or this falling channel formation. And once this is done, we will see some more momentum coming into the cryptos. And this time, we can again expect the Bitcoin to lead the Ethereum when it comes to the relative performance. Thank you so much, Milind, for being part of the show. So that's all there is in today's The Coin Monitor. This is Manoj Dara signing off, but keep watching Crypto TV for more such interesting updates. Thank you.
नमस्कार, मैं संदीप कसालकर। क्रिप्टो टीवी के शो क्रिप्टो क्राइम्स में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। क्रिप्टो की दुनिया में एक नया क्रिप्टो स्कैम सामने आया है जो रोमांस और डेटिंग से जुड़ा है। जी हाँ, अब क्रिप्टो स्कैमर्स ने डेटिंग ऐप्स को अपना निशाना बनाया है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे क्रिप्टो स्कैमर्स डेटिंग ऐप्स के जरिए प्यार का जाल बिछाकर सिंगल मैन और वुमन को इमोशनली मैनिपुलेट करते हुए फाइनेंशियल डिटेल्स निकालते हैं और करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी कर रहे हैं। हाल ही में हिंज नामक एक डेटिंग ऐप के जरिए एक चाइनीज स्कैमर ने एक अमेरिकी लेडी को प्यार में फंसाकर उसके साथ 2.3 करोड़ की धोखाधड़ी की थी। जैसे खोटा सिक्का कुछ ज्यादा ही चमकता है, वैसे ही जी ज़्याओ नाम का चाइनीज नेशनल दिखने में बहुत हैंडसम था। हिंज डेटिंग ऐप के थ्रू अपने आप को आर्किटेक्ट बताकर मेरीलैंड में रहने वाली मिस वू के साथ संपर्क बढ़ाया और एक दूसरे को फिजिकली मिले बिना ही दोनों को डिजिटली प्यार हो गया। बिल्कुल वैसे ही जैसे फेमस रोमांटिक मूवी यू हैव गॉट मेल में टॉम हैंक्स और मेग रैन को एक दूसरे से मेल के थ्रू प्यार हो जाता है। पर दोस्तों, वो मूवी थी, ये रियलिटी है। कहते हैं ना, लाइफ इज स्ट्रेंज दैन फिक्शन। ज़ाओ ने अपनी टारगेट मिस वू से कहा कि कोविड महामारी खत्म होते ही वो उसे अपने परिवार से मिलने के लिए चाइना ले जाएगा, पर उसने ऐसा नहीं किया, बल्कि प्यारी प्यारी बातें बनाकर उसे एक हैप्पी मैरिड लाइफ के सपने दिखाने लगा और ये एहसास दिलाया कि वो क्रिप्टो मार्केट का एक्सपर्ट है और बड़ी आसानी से मिस वू के पैसे कई गुना बढ़ाकर प्रॉफिट कमा कर दे सकता है। जब मिस वू फाइनेंशियल डिटेल शेयर करने से कतराई तो ज़ाओ ने उसे इमोशनली मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया। अगर तुम मुझ पर इतना विश्वास नहीं करती तो शायद हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। लोग कहते हैं प्यार अंधा होता है, पर सच तो यह है कि लोग प्यार में अंधे हो जाते हैं। वही मिस वू के साथ हुआ। उन्होंने ज़ाओ पर भरोसा करके कुछ ही हफ्तों में अपनी लाइफ टाइम की सेविंग अराउंड $300,000 यानी तकरीबन 2.3 करोड़ रुपए ज़ाओ के कहने पर हांगकांग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज OSL में बिटकॉइन खरीदने के लिए ट्रांसफर कर दिए। ज़ाओ ने मिस वू को एक फेक वेबसाइट पर उसके भेजे हुए पैसों के खरीदे बिटकॉइंस की अप एंड डाउन मूवमेंट दिखाई, जो कि पूरी तरह से फेक थी। मिस वू को लगा कि वो अपने बिटकॉइन इन्वेस्टमेंट से हो रहे प्रॉफिट से ज़ाओ के साथ धूमधाम से शादी करेगी, उसके साथ चाइना जाएगी, हनीमून पर जाएगी, एक खुशहाल जिंदगी बिताएगी। पर दोस्तों, यहाँ न कोई शादी हुई, न कोई हनीमून हुआ, न कोई क्रिप्टो विंडफॉल हुआ। उनका पैसा एक्सचेंज अकाउंट में जाने की बजाय सीधा गया स्कैमर्स के डिजिटल वॉलेट में और फिर ज़ाओ हुआ रफू चक्कर। बेचारी मिस वू को ज़ाओ ने फाइनेंशियली और इमोशनली तबाह कर दिया और वो आज भी ज़ाओ को ढूंढ रही है। दोस्तों, इस तरह के डेटिंग और रोमांस स्कैम्स हर दिन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार पिछले साल फेडरल ट्रेड कमीशन को कुल $139 मिलियन के लगभग 56,000 रोमांस घोटालों की सूचना दी गई थी, जो कि पिछले वर्ष एजेंसी को प्राप्त रिपोर्ट की तुलना में लगभग 2 गुना ज्यादा है। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की ओरेगॉन ऑफिस ने लास्ट ईयर चेतावनी भी दी थी कि क्रिप्टो डेटिंग स्कैम्स साइबर क्राइम की तरह एक मेजर कैटेगरी के रूप में उभर रहे थे, जहां 2021 के पहले 7 महीनों में 1800 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस विशेष प्रकार का स्कैम यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप में फैलने से पहले चाइना में ओरिजिनेट हुआ था। इसका चाइनीज नाम पिग बुचरिंग के रूप में ट्रांसलेट किया गया था। आप सोच रहे होंगे कि रोमांटिक क्रिप्टो स्कैम को पिग बुचरिंग जैसा वायलेंट नाम क्यों दिया गया है। तो जैसे बलि के बकरे को हलाल करने से पहले उसे खिलाया पिलाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह स्कैमर्स अपने विक्टिम्स को स्कैम से पहले फ्लैटरी और रोमांस के साथ फ्लैटन अप करने के बाद उन्हें फाइनेंशियली और इमोशनली हलाल कर देते हैं। ग्लोबल एंटी स्कैम ऑर्गेनाइजेशन के डिप्यूटी डायरेक्टर जैन सैंटियागो ने कहा कि टिपिकल रोमांस स्कैम के विपरीत, जो आमतौर पर पुराने लेस टेक सेवी एडल्ट्स को टारगेट करते हैं और साथ ही ये स्कैमर्स टिंडर, बम्बल और हिंज जैसे डेटिंग ऐप्स पर अधिक शिक्षित महिलाओं को टारगेट कर रहे हैं और ये ज्यादातर मिलेनियल्स होते हैं जो सबसे अधिक टारगेट होते हैं। ये स्कैम्स खासकर कोरोना लॉकडाउन के बाद बहुत ज्यादा बढ़ने लगे हैं, क्योंकि लॉकडाउन के कारण इंसान सोसाइटी से कट ऑफ हो गया था और अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त ऑनलाइन स्पेंड करने लगा। अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए डेटिंग ऐप से लोगों से जुड़ने लगा। इसी दौरान क्रिप्टो वेव ने दुनिया भर को जकड़ लिया और फिर लोगों के क्रिप्टो की तरफ बढ़ते बहाव का फायदा उठाकर स्कैमर्स ने डेटिंग ऐप के थ्रू क्रिप्टो स्कैम्स को अंजाम देना शुरू कर दिया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अब इस स्कैम को ऑर्गेनाइज क्राइम के बॉसेस एक बिजनेस की तरह रन कर रहे हैं। उन्हें समझ में आ गया कि गन दिखाकर लोगों को लूटने से ज्यादा फायदेमंद
और रिस्क फ्री तरीका लोगों को प्यार में फंसाकर लूटने का है। जैसे कॉल सेंटर में टेली मार्केटर्स को एक स्क्रिप्ट दी जाती है, वैसे इन स्कैमर्स के पास भी अपने टारगेट को फंसाने के लिए एक स्क्रिप्ट होती है। ये कॉनमैन लोगों को पढ़ने में बड़े माहिर होते हैं। प्लस ये लोग ऐसे एल्गोरिदम डिजाइन करते हैं जो सोशली ऑकवर्ड, सिंगल और अमीर लोगों की प्रोफाइल्स अपने आप सिलेक्ट करते हैं। फिर स्कैमर्स अपने टारगेट की आज तक की सारी ऑनलाइन एक्टिविटी को बारीकी से स्टडी करते हैं और उसी हिसाब से वो अपने विक्टिम को अप्रोच करते हैं। ये लोग सिंगल, डाइवोर्स और बुजुर्ग लोगों को अपना निशाना बनाते हैं जो ऑनलाइन अपने लाइफ पार्टनर की तलाश कर रहे होते हैं। आपको बता दें कि जेन ली, जो ऑनलाइन फ्रॉड प्रिवेंशन फर्म स्विफ्ट की एक रिसर्चर है, उन्होंने पिछले साल क्रिप्टो डेटिंग घोटालों की तलाश शुरू कर दी थी। उन्होंने कई लोकप्रिय डेटिंग एप्स के लिए साइन अप किया और जल्दी से उन पुरुषों के साथ कनेक्ट किया जिन्होंने उसे इन्वेस्टिंग एडवाइस देकर फंसाने की कोशिश की थी। जेन ली, जिनकी कंपनी खास करके इस तरह की धोखाधड़ी को रोकने के लिए कई डेटिंग ऐप के साथ काम करती है, उन्होंने कहा कि ये स्कैमर्स आमतौर पर कॉन्वर्सेशन को डेटिंग ऐप और व्हाट्सएप पर ले जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ मैसेजेस इंक्रिप्टेड होते हैं और इसकी वजह से कंपनीज या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को इसे ट्रैक करना कठिन हो जाता है। दोस्तों, इसी तरह का और एक स्कैम लास्ट ईयर हुआ था। मात्र 24 साल की निकी हचिनसन को, टेनेसी की सोशल मीडिया निर्माता है, वो पिछले साल एक क्रिप्टो रोमांस घोटाले का शिकार हुई थी। इस घोटाले में निकी हिंज ऐप पर हाउ नाम का एक व्यक्ति जो कपड़ों का व्यवसाय करता है उसके साथ कनेक्ट हुई थी। उसके बाद निकी कैलिफोर्निया में उससे मिलने गई थी। करीब 1 महीने से अधिक समय तक दोनों ने व्हाट्सएप पर मैसेज करना जारी रखा। इसी दौरान उसने हाउ को बताया कि उसे चाइना से गोद लिया गया था और उसने बताया कि वो भी चाइनीज ही है और वो उसी फ्रांस से है जहां उसका जन्म हुआ था। आपको बता दें कि उन्होंने एक बार वीडियो चैट भी किया था जहां हाउ ने उसके फेस पार्टली शो करके तुरंत हटा दिया था। निकी को लगा कि हाउ शर्मा रहा है, इसलिए उन्होंने ऐसे किया। पर दोस्तों, ये हाउ की चाल थी निकी को फंसाने के लिए। निकी को अपनी मां की मृत्यु के बाद अपने बचपन के घर की सेल से लगभग $300,000 विरासत में मिले थे और इस बारे में हाउ को पता था। फिर हाउ ने निकी को सुझाव दिया कि वो उस पैसे को क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करे। उसने कहा कि जब तुम फ्री हो जाओगे तब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि क्रिप्टो करेंसी में निवेश कैसे किया जाता है और पैसे कमाकर हम अपनी जिंदगी कैसे चेंज कर सकते हैं। आखिरकार निकी सहमत हो गई और हाउ ने दिए हुए वॉलेट एड्रेस पर क्रिप्टो की एक छोटी राशि भेज दी, जो उसने कहा कि ICAC नाम के क्रिप्टो एक्सचेंज पर एक खाते से जुड़ा था। फिर जब पैसा ICAC की वेबसाइट पर दिखाई दिया तो फिर उसने और पैसा भेजा। उसे विश्वास नहीं हुआ कि कितनी इजीली हम इसे पैसा कमा सकते हैं। आखिरकार निकी को कम समय में ज्यादा प्रॉफिट कमाने का चस्का लग गया। हाउ की बातों में आकर उसने अपनी लाइफ सेविंग इन्वेस्ट कर दी। इतना ही नहीं, लोन लेकर और भी ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर दिए। निकी को लगा वो शॉर्ट टाइम में क्रिप्टो मिलियनियर बन जाएगी, लेकिन कुछ महीनों में निकी ने जब अपने खाते से पैसे निकालने की कोशिश की तब अचानक ट्रांजैक्शन फेल हो गया और ICAC के एक कस्टमर सर्विस एजेंट ने उसे बताया कि जब तक वो टैक्सेस में hundreds of thousands of डॉलर का भुगतान नहीं करती तब तक उसका खाता बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद हाउ के साथ उसकी बातचीत अचानक से साइलेंट हो गई और निकी के पांव तले जमीन खिसक गई। अब फिलहाल निकी अपने जीवन को फिर से रिस्टोर करने का प्रयास कर रही है और साथ ही लोकल पुलिस द्वारा उस स्कैमर्स को ट्रैक डाउन करने की भी कोशिश कर रही है। हालांकि निकी को अपने पैसे वापस मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, फिर भी वो उम्मीद कर रही है कि एटलीस्ट बाकी लोग इस तरह के स्ट्रेंजर्स के बारे में अधिक सतर्क रहे जो उन्हें क्रिप्टो करेंसी में निवेश करने में मदद करने का वादा करते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें क्रिप्टो रोमांस या डेटिंग स्कैम में बहुत लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है और करोड़ों का नुकसान भी हुआ है। तो दोस्तों, इस तरह के स्कैमर्स से बचने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले न्यू कॉन्टैक्ट्स या फ्रेंड से आए रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने से पहले या मैसेज को रिप्लाई करने से पहले उस अननोन शख्स के बारे में रिसर्च करें। इस रिसर्च में आप उस शख्स का प्रोफाइल चेक करें जिसमें आप उसकी पर्सनल डिटेल चेक कर सकते हैं। ध्यान रखें कि स्कैमर्स किसी के बारे में भी बहुत आसानी से इम्पर्सनेट हो सकते हैं। FICO के पोर्टफोलियो मार्केटिंग ग्लोबल फ्रॉड और कंप्लायंस के सीनियर डायरेक्टर सरा रुदरफोर्ड के अनुसार आपको आए नए कॉन्टैक्ट्स के प्रोफाइल फोटो को पहले चेक करें कि क्या इस फोटो का उपयोग कहीं और तो नहीं किया जा रहा है, क्योंकि यदि आपको एक ही तस्वीर अलग अलग नामों से संलग्न दिखाई दे तो याद रखें कि ये स्कैमर ही हो सकता है।
वही दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, आप अपने फाइनेंशियल डिटेल को कहीं पर भी शेयर न करें। वैसे हम सब जानते हैं कि अपनी फाइनेंशियल डिटेल जैसे कि क्रेडिट कार्ड, सोशल सिक्योरिटी नंबर, ये सब किसी अनजाने के साथ नहीं शेयर करना चाहिए। पर दोस्तों, ये बात स्कैमर्स भी जानते हैं और इसलिए वो आपकी पहले पूरी इंफॉर्मेशन निकालते हैं और उस इंफॉर्मेशन के जरिए फिर आपको ईमेल, मैसेज या फोन द्वारा आपको इस तरह से बहलाते हैं कि आप आपकी फाइनेंशियल डिटेल्स देने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी बहकाव में न आकर अपनी फाइनेंशियल डिटेल्स को कहीं पर भी शेयर न करें। आखिर में सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई आपकी बहुत तारीफ करता है तो भी आपको होशियार रहना होगा। कई बार स्कैमर्स अपने चैट करते समय तुरंत आपको लव के मैसेज भेजेगा, अचानक से आपसे प्यार का इजहार करना शुरू कर देगा। इन लोगों से आपको हमेशा सतर्क रहना है, क्योंकि आपका एक गलत कदम आपकी जीवन भर की कमाई पूरी राशि को चुटकी भर में खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि क्रिप्टो की इस दुनिया में रोमांस और डेटिंग स्कैम कैसे होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। तो दोस्तों, आज का ये शो आपको कैसे लगा, ये जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें। अगर आपको ये शो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, क्रिप्टो टीवी को सब्सक्राइब करना न भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नए क्रिप्टो क्राइम स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसालकर आपसे विदा लेता हूं। देखते रहिए क्रिप्टो टीवी, आपका क्रिप्टो पार्टनर। Welcome to Crypto TV, world's first 24/7 streaming channel focusing on blockchain technology and cryptocurrencies. Download the CryptoWire app and subscribe to our YouTube channel Crypto TV to stay updated with latest trends in global crypto market, NFTs, metaverse, in-depth market analysis and cutting edge of blockchain technology. Stay tuned. कहते हैं इंडिया में दो ही रिलीजन है, पहला बॉलीवुड और दूसरा क्रिकेट, जिनके लिए लोगों की दीवानगी सोच से परे है। यही वजह है कि बॉलीवुड स्टार्स और क्रिकेटर्स जो भी करते हैं वो सुपर हिट हो जाता है। तभी तो ये स्पोर्ट्स स्टार्स ऑन फील्ड जलवे बिखेरने के बाद अब ऑफ फील्ड भी अपने स्टारडम का दम दिखाते नजर आ रहे हैं। दरअसल मैं बात कर रही हूँ क्रिप्टो वर्ल्ड की लेटेस्ट ट्रेंड यानी NFTs की, जहां सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक, सुनील गावस्कर और झूलन गोस्वामी ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। इनके अलावा और कई प्लेयर्स इस लिस्ट में शामिल होने की फिराक में हैं। NFTs की इस फहरिस्त में सबसे ऊपर नाम है सचिन 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 जी हाँ, सचिन तेंदुलकर का। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन के भी क्या कहने। कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुके सचिन लगता है NFT की दुनिया में भी नया रिकॉर्ड कायम करेंगे। सचिन की इस NFT कलेक्शन में क्रिकेट से जुड़े कई गोल्डन मोमेंट्स कैद हैं, जैसे कि रिटायरमेंट टेस्ट से जुड़ी कलेक्शन, ऑटोग्राफ्स ऑफ इंडियन टीम प्लेयर्स ऑन देयर मेडन टूर टू इंग्लैंड इन 1932। साथ ही 1983 की टीम का साइन किया गया मेमोरेबलिया भी इसकी शान बढ़ा रहा है। इतना ही नहीं, लेजेंडरी डोनाल्ड ब्रैडमैन के साइंड रेयर स्टैम्प्स और 1983 में इंडिया की वर्ल्ड कप विनिंग के बाद लता मंगेशकर के कॉन्सर्ट की रिकॉर्डिंग भी इस NFT कलेक्शन की शोभा बढ़ा रहे हैं। सचिन ने खास तौर पर अपने फैंस के लिए इसमें ग्लोबल क्रिकेट से जुड़े 23 आर्टिफैक्ट्स भी जोड़े हैं। सचिन ने इस प्राइसलेस NFT को रेव स्पोर्ट्स और फैनेटिक स्पोर्ट्स के एसोसिएशन में क्लिक फ्लिक पर ऑक्शन किया है। और अब बात उस क्रिकेट स्टार की जिसने लगातार
6 छक्के लगाकर हर किसी के होश उड़ा दिए थे। जी हाँ, जब युवराज सिंह का बल्ला बोलता है तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। ऐसे में फॉर्मर इंडियन ऑलराउंडर युवराज सिंह ने डिजिटल कलेक्टिबल्स NFT मार्केटप्लेस कोलेक्शन के साथ पार्टनरशिप कर अपनी कई पर्सनल और क्रिकेट मोमेंट्स को NFT के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया। युवराज सिंह ने अपनी इस NFT के बारे में बताते हुए एक वीडियो में अपने फैंस का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उनकी पहली गेंद से लेकर उनकी जर्सी टांगने के फैसले तक हमेशा उनका साथ दिया। अच्छे समय पर पीठ थपथपाई तो बुरे समय पर हौसला बढ़ाया। युवराज की जिंदगी के प्रेशियस मोमेंट से सजी इस NFT की बदौलत कोलेक्शन NFT मार्केटप्लेस अब किसी वर्चुअल म्यूजियम से कम नजर नहीं आ रही, जहां युवराज की जर्नी और प्रीमियम NFT कलेक्शन दुनिया भर के फैंस को अट्रैक्ट कर रही है। और अब बात नजफगढ़ के नवाब की। फॉर्मर इंडियन ओपनिंग बैट्समैन वीरेंद्र सहवाग का नाम सुनकर आज भी कई इंटरनेशनल प्लेयर्स कांप जाते हैं। अपनी धुआंधार बैटिंग के लिए जाने जाने वाले वीरू पाजी हाल फिलहाल में NFT बैंडवैगन में शामिल हुए, जिसके लिए उन्होंने NFT प्लेटफॉर्म रेडियो को चुना। रेडियो दुनिया का पहला फर्स्ट ऑफिशियली लाइसेंस्ड क्रिकेट डिजिटल कलेक्टिबल्स प्लेटफॉर्म है, जो क्रिकेटर्स के अलावा इंटरनेशनल लीग से भी जुड़ी NFTs में ट्रेड करता है। सहवाग ने रेडियो के साथ अपने पार्टनरशिप में फैंस के लिए अपने फाइनेस्ट क्रिकेटिंग मोमेंट्स से जुड़ी यादों को NFT का अवतार दिया। इस लिस्ट में ऑलराउंडर स्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा का नाम भी शामिल है, जो कई खास मौकों पर अपने जबरदस्त बैटिंग अटैक से फैंस को अपना मुरीद बना चुके हैं। फैन क्रेज पर अपनी इस NFT कलेक्शन में रोहित ने 2019 ICC वर्ल्ड कप में जीते ICC गोल्डन बैट और अपनी फर्स्ट IPL हैट्रिक से जुड़े कई मेमोरेबलिया शामिल किए हैं। मेल डोमिनेटेड इस क्रिकेट स्पोर्ट में हमारी वुमनिया वुमनिया भी शामिल है। फीमेल क्रिकेटर झूलन गोस्वामी भले ही इन दिनों अपनी बायोपिक को लेकर सुर्खियों में है, लेकिन वो NFT वर्ल्ड में जोरदार सिक्सर लगाने वाली पहली फीमेल क्रिकेटर के तौर पर भी काफी लाइमलाइट बटोर रही हैं। क्रिकफ्लिक्स, रेव स्पोर्ट्स और फैनेटिक स्पोर्ट्स के सहयोग से लॉन्च की गई इस NFT में गोस्वामी की जर्सी के अलावा फैंस के लिए NFT के रूप में उनके क्रिकेट खेलने के दिनों से जुड़े कई रेयर और ऑथेंटिक क्रिकेट मेमोरेबलिया भी हैं। NFT वर्ल्ड में क्रिकेट की दुनिया के दिग्गजों की एंट्री यही खत्म नहीं होती, बल्कि इस लिस्ट में सुनील गावस्कर से लेकर जहीर खान, ऋषभ पंत, स्मृति मंदाना, शिफाली वर्मा, AB डिविलियर्स, शाकिब अल हसन और फैफ डु प्लेसिस जैसे धुरंधरों का नाम भी शामिल है। और वक्त के साथ इस फहरिस्त में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने फैन क्रेज के साथ हाथ मिलाते हुए ICC क्रिकेटोस नाम से अपनी कलेक्शन लॉन्च की, जिसमें 2015 और 2019 के ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप से जुड़ी खास चीजों के अलावा टोटल 75 की मोमेंट्स हैं, जिन्हें NFT में कन्वर्ट किया गया है। इनमें विराट कोहली, MS धोनी, केन विलियमसन, AB डिविलियर्स, क्रिस गेल और कुमार संगकारा जैसे दमदार क्रिकेटर्स के साथ NFTs भी शामिल हैं। तो कैसी लगी आपको स्पोर्ट्स NFT पर हमारी स्पेशल स्टोरी? To know more such interesting facts, do watch my stories. This is Ruchi Sharma signing off. Do like, share and subscribe to Crypto TV. Have a great day. हाय गाइस, मी वैभवी सावंत स्वागत करते तुमचं क्रिप्टो टीव्ही मध्ये। क्रिप्टो ॲसेट नेमकं काय आहेत, त्याचे किती प्रकार असतात, त्याचे फायदे काय आहेत, हे आपण मागील एपिसोड मध्ये जाणून घेतलं। तर आज आपण पाहणार आहोत क्रिप्टो ॲसेट मार्केट मध्ये कोणकोणते महत्त्वाचे ॲक्टर्स आहेत। त्यात प्रथम क्रमांक आहे इन्व्हेस्टर, जे क्रिप्टो ॲसेटच्या दुनियेत सर्वात महत्त्वाचे ॲक्टर आहेत।
म्हणजेच जी लोक वेगवेगळ्या क्रिप्टो ॲसेटमध्ये आपले पैसे इन्व्हेस्ट करतात. तुम्हाला माहित आहे का, सर्वात जास्त क्रिप्टो ओनर्स हे भारतात आहेत, म्हणजेच जवळपास 10 करोड एवढे. आणि ह्यामध्ये सर्वप्रथम 24 वयोगटातील तरुण मंडळी आहेत. म्हणजेच याचा अर्थ तुम्हाला कळत असेलच की तरुणाईमध्ये याचा जास्त क्रेज पाहायला मिळत आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर आहे फायनान्शियल इंटरमिजिएटरीज, म्हणजेच आर्थिक मध्यस्थी. क्रिप्टो ॲसेटच्या मार्केटमध्ये जे दुसरे मेन ॲक्टर आहेत ते आहेत ब्रोकर आणि ॲडवायझर. स्टॉक मार्केट प्रमाणेच येथे सुद्धा ब्रोकर्स आणि ॲडवायझर्स ट्रेडर्सला क्रिप्टोमध्ये इन्व्हेस्ट करण्यासाठी ॲडवाइस करत असतात. तिसऱ्या क्रमांकावर जर आपण म्हटलं तर आहे ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म्स आणि एक्सचेंजेस. यामध्ये ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म आणि एक्सचेंजेसवर क्रिप्टो ॲसेटची होते जास्तीत जास्त डीलिंग. जगातील टॉप 5 एक्सचेंजेस आहेत बायनान्स, कॉइनबेस एक्सचेंज, FTX, कार्केट आणि कुकॉइन. आणि भारतात जर पाहिलं तर टॉप एक्सचेंजेसमध्ये कॉइनस्विच, कुबेर, वझिरेक्स इत्यादी आहेत. चौथ्या क्रमांकावर आहे वॉलेट प्रोव्हायडर्स. आपल्याला तर माहीतच आहे की क्रिप्टो करन्सी ही नेहमी वॉलेट्समध्ये स्टोअर केली जाते, मग ते हॉट वॉलेट असू दे किंवा कोल्ड वॉलेट. ग्लोबली जर पाहिलं तर भरपूर असे वॉलेट्स प्रोव्हायडर आहेत. फॉर एक्झाम्पल कॉइनबेस वॉलेट जे बिगनर्ससाठी खूप चांगलं आहे. नंतर इलेक्ट्रियम वॉलेट जे खास करून बिटकॉइनसाठी चांगलं आहे. त्यानंतर मायसिलियम जे मोबाईलसाठी चांगलं आहे. नंतर लेजर नॅनो एक्स हे ऑफलाईन क्रिप्टो वॉलेटसाठी चांगलं आहे. आणि शेवटी एक्झोडस हे डेस्कटॉपसाठी चांगलं आहे. तर आपण पुन्हा वळणार आहोत क्रिप्टो ॲसेट मार्केटच्या ॲक्टर्सकडे. तर 5व्या क्रमांकावर आहे पेमेंट आणि मर्चंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर. यामध्ये क्रिप्टो ॲसेटचे बरेच ट्रान्झॅक्शन हे व्हिसा कार्ड आणि मास्टर कार्ड सारख्या पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्सच्या माध्यमातून सुद्धा करता येते. खरं तर यामध्ये क्रिप्टो ॲसेट डीलिंगसाठी मर्चंट सर्व्हिस प्रोव्हायडरचा सुद्धा खूप महत्त्वाचा रोल आहे. फॉर एक्झाम्पल कॉइनबेस जे शॉपिफाय आणि वूकॉमर्स सोबत इंटिग्रेट करते. बिटपे हे वन ऑफ द फर्स्ट क्रिप्टोकरन्सी पेमेंट गेटवे आहे आणि यावर भरपूर प्रकारचे वर्सटाईल पेमेंट ऑप्शन आहेत. यासारखंच कॉइनगेट सुद्धा खूप ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म सोबत इंटिग्रेट करत असतात. पुढे 6व्या क्रमांकावर जर म्हटलं तर आहे लिक्विडिटी प्रोव्हायडर्स. यामध्ये क्रिप्टो ॲसेट मार्केटमध्ये लिक्विडिटी प्रोव्हायडर्सची सुद्धा महत्त्वाची भूमिका आहे. तसेच हाय लिक्विडिटीचा अर्थ आहे प्राइस स्टेबल असणं आणि त्यात कोणत्याही प्रकाराचे चढ उतर नसणं. आता यामध्ये 5 लिक्विडिटी प्रोव्हायडर्स आहेत, ज्यामध्ये लंडन UK मधून FXCM Pro, मॉस्को रशियामधून B2 ब्रोकर, सायप्रस मधून लेव्हिरेट आणि लंडन UK मधून X ओपन हब आणि भरपूर सारे आहेत. नेक्स्ट 7व्या क्रमांकावर आहे मायनर्स आणि व्हॅलिडेटर्स. यामध्ये क्रिप्टो ॲसेट मार्केटमध्ये होणारी सर्व ट्रान्झॅक्शनला मायनर किंवा व्हॅलिडेटर्स अप्रूव्ह करत असतात. मायनर्स प्रूफ ऑफ वर्क फॉलो करतात आणि व्हॅलिडेटर्स प्रूफ ऑफ स्टेकला. निश्चितच आता तुमच्या मनात प्रश्न येत असणार की क्रिप्टो ॲसेटच्या ट्रान्झॅक्शनमध्ये कोण असतात आणि कोण कोण यामध्ये इन्व्हॉल्व्ह होतात. मग चला तर प्रश्नाची उत्तरं आम्ही आपल्याला देतो. बघा, क्रिप्टो ॲसेटच्या ट्रान्झॅक्शनमध्ये 5 पार्टिसिपेंट असतात. फर्स्ट, युजर्स, जी लोक या लीगल एंटिटीज म्हणजेच कायदेशीर संस्थांमध्ये असतात, जे क्रिप्टो ॲसेट सोबत पिअर टू पिअर पेमेंट करत असतात किंवा गुड्स अँड सर्व्हिसेस किंवा इन्व्हेस्टमेंटचे परचेस किंवा सेल करत असतात. सेकंड, मायनर्स, ब्लॉकचेनवर होणारे सर्व ट्रान्झॅक्शनचे प्रूफ ऑफ वर्क कन्सेन्सस मेकॅनिझमच्या थ्रू मायनर्स हे व्हॅलिडेट करत असतात. यासाठी मायनर्स कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेअरचा अजून खूप जास्त प्रमाणात कॉम्प्युटिंग पॉवरसाठी वापर होत असतो. या कामाच्या बदल्यात मायनर्सला नेहमी डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो ॲसेटमध्ये कॉम्पेन्सेट केलं जातं. थर्ड, क्रिप्टो ॲसेट एक्सचेंजेस. क्रिप्टो ॲसेट एक्सचेंजेसच्या माध्यमातून युजर्स आपल्या क्रिप्टो ॲसेटला फिएट करन्सीच्या बदल्यात किंवा दुसऱ्या क्रिप्टो ॲसेटच्या बदल्यात एक्सचेंज करू शकतात.
या सर्व्हिसेससाठी क्रिप्टो ॲसेट एक्सचेंजेस हे फीस चार्ज सुद्धा करते. हे एक्सचेंजेस कोणत्या ॲडमिनिस्ट्रेटर सोबत संलग्न आणि स्वतंत्र असू शकते किंवा थर्ड पार्टी प्रोव्हायडर सुद्धा असू शकते. फॉर एक्झाम्पल Bitfinex आणि कार्पेट. फोर्थ, ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म. क्रिप्टो ॲसेट एक्सचेंजेसच्या ऐवजी ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म सुद्धा ट्रान्झॅक्शन फॅसिलिटेट करत असतात, जे अशा मार्केट प्लेस सारखे काम करत असतात जे वेगवेगळ्या युजर्सला कनेक्ट करतात. एक्सचेंजेस सारख्या या ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म क्रिप्टो ॲसेटला परचेस किंवा सेल नाही करता येत, तर फक्त त्याच्याकडे आपल्याला ट्रान्झॅक्शनला फॅसिलिटेट करत असतात. 5. वॉलेट प्रोव्हायडर्स. वॉलेट प्रोव्हायडर्स युजर्सला असे वॉलेट प्रोव्हाइड करतात जे क्रिप्टो ॲसेटची होल्डिंग, स्टोरेज आणि ट्रान्सफर्समध्ये हेल्प करतात. हे वॉलेट्स युजर्ससाठी प्रायव्हेट की होल्ड करत असतात आणि युजर्सला ब्लॉकचेन नेटवर्कवर उपस्थित पब्लिक कीच्या माध्यमातून क्रिप्टो ॲसेटमध्ये ट्रान्झॅक्ट करण्यासाठी मदत करत असतात. वॉलेट प्रोव्हायडर्स युजर्सची ट्रान्झॅक्शन हिस्ट्री अशा प्रमाणे मेंटेन करतात की जी रीडेबल असेल, जेणेकरून ट्रान्झॅक्शनची सिक्युरिटी राखली जाईल. वॉलेट प्रोव्हायडर सुद्धा 2 प्रकारचे असतात, एक हार्डवेअर आणि दुसरे सॉफ्टवेअर वॉलेट प्रोव्हायडर्स. वॉलेट्सला स्टोअर करण्यासाठी सुद्धा 2 पद्धती असतात, एक ऑनलाईन म्हणजेच हॉट वॉलेट आणि दुसरे ऑफलाईन म्हणजेच कोल्ड स्टोरेज. कधी कधी एक्सचेंजेस युजर्सची क्रिप्टोग्राफिक कीला सेफगार्ड करून कस्टोडियन वॉलेट प्रोव्हायडर्सला फायदा सुद्धा पोहोचवत असते. तर मित्रांनो, क्रिप्टो ॲसेट्सच्या खास प्रोग्राममध्ये सध्या एवढंच. मला आशा आहे की क्रिप्टो ॲसेटला घेऊन तुमच्या मनातल्या प्रत्येक शंकेचं आम्ही निरसन केलं असणार. क्रिप्टो विषयीचे अशाच प्रकाराचे नवीन टॉपिक्स आम्ही आपल्या समोर घेऊन येणार आहोत. तोपर्यंत पाहत रहा क्रिप्टो टीव्ही. बाय. ऑफ क्रिप्टो. ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स की हर छोटी बड़ी हलचल की इंफॉर्मेशन, क्रिप्टो मार्केट के अप्स एंड डाउन्स की डिटेल्स, बिटकॉइन के घटते बढ़ते रेट्स और वर्चुअल करेंसी से जुड़े फन फैक्ट्स के साथ और भी बहुत कुछ. देखते रहिए देखते रहिए क्रिप्टो टीवी. क्रिप्टो टीवी. क्रिप्टो टीवी. क्रिप्टो टीवी. माइंड. नमस्कार, मैं संदीप कसालकर. क्रिप्टो टीवी में आप सभी का स्वागत है. क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ क्रिप्टो की दुनिया में. सबसे पहले रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर. $660 मिलियन के लोन को पे करने से चूकी 3 एरोज कैपिटल. बढ़ते डिफॉल्ट्स के बीच लड़खड़ाते दिखे बिटकॉइन और इथेर. इथेरियम लेंडिंग प्रोटोकॉल पर हुआ $3.8 मिलियन का अटैक, 50% की हुई रिकवरी. पिछले हफ्ते डिजिटल एसेट्स इन्वेस्टमेंट्स ने दिखा रिकॉर्ड आउटफ्लोज. ASCI के अनुसार 400 से ज्यादा क्रिप्टो एड्स ने गाइडलाइंस का किया उल्लंघन. न्यूयॉर्क NFT ने अटेंडीज को किया कोविड-19 से संक्रमित. ऑस्ट्रेलियन क्रिप्टो ट्रेडिंग फर्म बैंक्सा ने अपने 30% स्टाफ को निकाला. NFT बैंड वैगन में शामिल हुए आर माधवन, जारी की रॉकेट ट्री NFT सीरीज. अब देखते हैं खबरें विस्तार से.
क्रिप्टो ब्रोकर वॉयजर डिजिटल ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि उसकी यूनिट्स में से एक ने हेज फंड 3 एरोस कैपिटल 3AC इशू किया था, जिसमें 15,250 बिटकॉइन और USDC में $350 मिलियन का लोन रिपे में इनएबिलिटी के लिए एक डिफॉल्ट नोटिस था, जिसकी कीमत रफली $660 मिलियन थी। वॉयजर ने इस महीने की शुरुआत में 3AC द्वारा पोटेंशियल डिफॉल्ट को हरी झंडी दिखाई थी। अब ये कानूनी कार्रवाई के माध्यम से फंड्स की रिकवरी को आगे बढ़ाने का इरादा रखता है। $660 मिलियन के लोन पर 3AC का डिफॉल्ट हेज फंड के स्ट्रेस फाइनेंस को दर्शाता है। लीडो स्टेक इथेरियम STETH की वैल्यू में तेज गिरावट दिखी, जिसे 3AC ने कोलैटरल के रूप में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया था। उसने फर्म को कई मार्जिन कॉल्स के लिए एक्सपोज किया, जिसे यह अपने फंड के जरिए बंद हो गया। 3AC अपनी इंसॉल्वेंसी से निपटने के लिए कई ऑप्शंस पर विचार कर रही है, जिसमें एसेट सेल्स और बेल आउट टॉक भी शामिल है। ऐसे में अब तक कंपनी को अपने कई टोकन बेचते हुए देखा गया है, जो मार्जिन कॉल्स को पूरा करने की सबसे अधिक संभावना है। वॉयजर 3AC के खिलाफ रिकवरी के इस्तेमालों को आगे बढ़ाने वाली कई फर्म्स में से पहली होने की संभावना है। यह साफ नहीं है कि 3AC का डेब्ट एक्सपोजर किस हद तक है। बिटकॉइन और इथेरियम दो सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी कॉइन सोमवार को नीचे आते हुए देखे गए और स्टॉक के प्रदर्शन से अलग होते हुए भी देखे गए, क्योंकि क्रिप्टो लेंडर्स द्वारा बढ़ते डिफॉल्ट्स ने इन्वेस्टर्स को डिजिटल एसेट से दूर रहने के लिए मजबूर किया है। क्रिप्टो ब्रोकरेज वॉयजर डिजिटल ने दिन की शुरुआत में 3 एरोस कैपिटल यानी 3AC को डिफॉल्ट का नोटिस जारी किया था, क्योंकि हेज फंड अपने 15,250 बिटकॉइन और USDC में $350 मिलियन के लोन्स पर रिक्वायर्ड पेमेंट्स करने में फेल रहा है। इतना ही नहीं, वॉयजर ने यह भी घोषणा की है कि उसने अल्मेडा वेंचर्स द्वारा प्रदान की गई इमरजेंसी $200 मिलियन कैश और USDC क्रेडिट लाइन में से $75 मिलियन का विड्रॉल किया है। उस फैसिलिटी में 15,000 बिटकॉइन रिवॉल्वर भी शामिल है। डिजिटल एसेट्स के लिए ग्रिम आउटलुक ने भी इन्वेस्टर्स की धारणा को प्रभावित किया है। गोल्डमैन सैक्स ने आज क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में लगातार गिरावट और इंडस्ट्री एक्टिविटी लेवल्स में आगामी गिरावट के कारण क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइनबेस की रेटिंग को सेल से न्यूट्रल के लिए कट किया है। फेडरल रिजर्व की इंटरेस्ट रेट इंक्रीज की उम्मीदों के बीच US स्टॉक फ्यूचर्स में बढ़त दर्ज की गई है, जो मेजर इंडेक्सेस में बढ़त की ओर दर्शाता है। ऐसे में S&P 500 के लिए फ्यूचर्स सोमवार को 0.2% बढ़ा, जबकि डो जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज के लिए फ्यूचर्स 0.1% बढ़ा। टेक्नोलॉजी फोकस नैस्डैक 100 के कॉन्ट्रैक्ट्स में 0.3% की बढ़त हुई। इन सबके बीच बिटकॉइन ने हाल ही में पिछले 24 घंटों में 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ अराउंड $21,100 पर ट्रेड किया, जबकि इथेर ने उसी समय के दौरान 2% से ज्यादा की गिरावट के साथ अराउंड $1,211 पर ट्रेड किया है। एक्स कार्निवल एक इथेरियम बेस्ड प्रोटोकॉल जो NFT के लिए एक लेंडिंग एग्रीगेटर के रूप में काम करता है, उसने एक एक्सप्लॉइट में खोए हुए $3.8 मिलियन में से 50% की रिकवरी की है। एक हैकर ने एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फ्लॉ का फायदा उठाया, जिसने गिरवी रखी हुई एसेट को कोलैटरल के रूप में भी इस्तेमाल करने की अनुमति दी। इस मामले में बोर्ड ऐप यॉट क्लब नॉन फंजिबल टोकन हैकर ने $1.85 मिलियन वर्थ के 1500 ETH बाउंटी को एक्सेप्ट किया है। इसके बदले में $1.8 मिलियन वर्थ के 1467 ETH को रिटर्न किया और कोई लीगल एक्शन नहीं लिया। एक्स कार्निवल ने चोरी हुए ETH के 50% की वापसी के लिए बातचीत की। इथरस्कैन ट्रांजैक्शन से पता चलता है कि हैकर ने एक्स कार्निवल टीम द्वारा शेयर किए गए एड्रेसेस पर पहले ही 1467 ETH भेज दिए हैं। एक्स कार्निवल ने हमले का मुकाबला करने के लिए अपनी सर्विसेज के एक पोर्शन को टेम्पररी सस्पेंड करते हुए यूजर्स को हैक के बारे में लगातार इन्फॉर्म किया। एक्स कार्निवल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को भी सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि सभी डिपॉजिट और बोरोइंग एक्शंस टेम्पररी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। डिजिटल एसेट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स ने पिछले हफ्ते कुल $423 मिलियन का आउटफ्लो देखा है, जो रिकॉर्ड के बाद से सबसे बड़ा है। हालांकि आउटफ्लोज मैनेजमेंट के तहत सिर्फ 1.2% एसेट्स को रिप्रेजेंट करता है, जो फरवरी 2018 में बियर मार्केट के दौरान रिकॉर्ड की तुलना में कम है, जहां आउटफ्लोज AUM का 1.6% रिप्रेजेंट करता है। रीजनली आउटफ्लोज लगभग पूरी तरह से कनेडियन एक्सचेंजेस और एक स्पेसिफिक प्रोवाइडर से होता था। $423 मिलियन के आउटफ्लोज को स्ट्रिप आउट करने से पता चलता है कि दूसरे प्रोवाइडर्स ने कुल $70 मिलियन का टोटल इनफ्लो देखा, जो डिजिटल एसेट इन्वेस्टर्स के बीच हाईली पोलराइज्ड सेंटीमेंट को उजागर करता है। आउटफ्लोज पूरी तरह से बिटकॉइन पर फोकस था, जिसने हफ्ते के लिए
टोटल $453 मिलियन का नेट आउटफ्लो देखा। ईयर टू डेट लगभग सभी इनफ्लोज को मिटा दिया है और टोटल बिटकॉइन AUM को $24.5 बिलियन पर छोड़ दिया है, जो 2021 की शुरुआत के बाद से सबसे लोएस्ट पॉइंट है। शॉर्ट बिटकॉइन ने पिछले हफ्ते पहले US बेस्ड शॉर्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट के लॉन्च के कारण टोटल $15 मिलियन की इनफ्लो देखी, जबकि पुराने शॉर्ट इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में आउटफ्लोज देखा गया। ऐसे में इथेरियम में टोटल $11 मिलियन का इनफ्लोज देखा गया है, जो लगातार 11 हफ्तों के आउटफ्लोज के बाद पहला है। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया यानी ASCI ने कहा कि अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स द्वारा क्रिप्टो करेंसी से संबंधित 400 से अधिक विज्ञापनों ने 2022 के पहले 5 महीनों में उनके गाइडलाइंस का उल्लंघन किया था। जनवरी से मई 2022 के बीच ASCI को 453 कंप्लेंट्स मिली। उनमें से 419 को एक या एक से अधिक क्रिप्टो या इन्फ्लुएंसर क्राइटेरिया का उल्लंघन करते हुए पाया गया, जिसमें ज्यादातर शिकायतें सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ की गई थी। गाइडलाइंस जो 1 अप्रैल को लागू हुए सभी VDA प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को डिस्क्लेमर से जाने के लिए अनिवार्य कर दिया, जिसमें लिखा था कि क्रिप्टो प्रोडक्ट्स और NFT अनरेगुलेटेड है और अत्यधिक जोखिम भरे हो सकते हैं। इस तरह के ट्रांजैक्शन से किसी भी नुकसान के लिए कोई रेगुलेटरी सहारा नहीं हो सकता है। ASCI एक सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी है और इसके गाइडलाइंस कानूनी रूप से बाइंडिंग नहीं है। उल्लंघन के मामले में स्टैंडर्ड्स बॉडी उन लोगों के नाम प्रकाशित करता है जिन्होंने गाइडलाइंस का पालन नहीं किया है और केसेस को संबंधित गवर्नमेंट रेगुलेटर के पास भेजता है। NFT न्यूयॉर्क सिटी NFT.NYC ने 20 से 23 जून 2022 में 3 डे कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें NFT कम्युनिटी को डिबेट्स, टॉक्स और वर्कशॉप्स के लिए NYC में एक साथ लाया गया। यह शो ग्लैमरस और सक्सेसफुल दोनों था। हालांकि इसने लोगों तक एक वायरस फैलाया। कई सोर्सेस के अनुसार कई उपस्थित लोग इस आयोजन के बाद कोरोना वायरस डिजीज कोविड-19 से ग्रस्त हुए। कई ट्विटर यूजर्स ने अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं और उन सभी के लिए एक सामान्य कॉल है जो इस इवेंट में शामिल हुए हैं उनके कोविड टेस्ट करने के लिए। इससे पहले 18 जून को एक वेरीफाइड यूजर सात्विक सेठी ने पब्लिक से अपील करते हुए कहा कि कोविड या कोविड जैसे सिम्टम्स वाले लोगों को सभी के हित में NFT.NYC इवेंट में शामिल नहीं होना चाहिए। NFT.NYC दुनिया का सबसे बड़ा NFT कॉन्फ्रेंस है। इस वर्ष के आयोजन में 15,000 से अधिक आर्टिस्ट और इंथुजियास्टिक न्यूयॉर्क के केंद्र में कई वेन्यूज पर 1500 से अधिक स्पीकर्स ने भाग लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। क्रिप्टो वर्ल्ड से जुड़ी नई खबरों के साथ बने रहिए क्रिप्टो टीवी के साथ। तब तक के लिए मैं संदीप कसलकर आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार। Hello and a very warm welcome to all the viewers of Crypto TV. This is Manoj Dara. The pandemic proved to be a threat for India's cybersecurity that led to the leaks of COVID-19 test results and a cyber attack on systems of an airline service provider that resulted in the leakage of personal data of 4.5 million passengers. According to a study by US cyber tech firm CrowdStrike, on an average, companies across the world take 7 days to respond to cybersecurity breaches. In contrast, Indian companies take around 9 days. These stats push India to the bottom of the list when it comes to dealing with cybersecurity threats and attacks. To explain the concept of cybersecurity in detail, we have invited a very robust panel for you. So what's upping India's cybersecurity threat? We will discuss this. What makes it so hard to implement a cohesive cybersecurity policy? We will bring to you. We have invited Mr. Bharat Panchal, Chief Industry Relation and Regulatory Officer at Discover Financial Services, and he is a mastermind architect of digital risk management and cyber security for India's payment ecosystem. Bharat sir, welcome on Crypto TV.
Thank you. Thank you very much, Manoj. Our second guest is Mr. Preetham Rao. He is CEO of Quill Audits, creating a secure Web3 ecosystem through smart contract audits. Preetham, welcome to the show as well. Thanks for having me. Our third guest is Deepika Singh, Maharashtra's Cyber Police Department. She has come from Harvard and she is a mentor as well on many projects. Deepika, welcome to the show. Our fourth guest is Mr. Prasanna Loha, Chief Innovation Officer, DCB Bank, and he is a founding member at India's Blockchain Forum. Prasanna, welcome to the show as well. Thank you, Manoj. Look forward for this wonderful discussion today. Absolutely. So my first question is to Bharat sir. What's your opening remarks as far as cyber security concerned in India's context to begin with? Well, thank you for having us on this wonderful show. And this, I would say, it is a need of hour to discuss about the cybersecurity challenges. Unfortunately, we have seen a digital disruption in last 1 decade, but at the same time, we have seen the flip side of that, and that is called the cybersecurity challenges or cybersecurity attack or whatever name you may give. That exposes us to the world, which is, though it is virtual world and the invisible world, but where the maximum threats are coming, be it human being, be it consumer, be it organization, be it government, or even it comes to national security as well. So I believe that the collectively the cybersecurity is something which has become a maniac, which is definitely going to take a lot of time, a lot of effort from all of us to manage in a very controlled manner. Sure, Preetham, my next question to you is, what's your experience involving cyber fraud and, how blockchain can help safeguard it even further as far as, we're talking about your opening remarks, if you can just highlight that. Sure. So like in our startup world, all the startups are mostly focusing on the building of the things, the development of the things, right? So very less startups are focusing on the, you can say the safe and, cyber secure their product or anything. Like in startup world, we can see many startups like Zomato users, like the data got hacked and data got leaked, right? So as a startup, if you're building a product, we should be focusing on the cybersecurity or security of the product from the first stage only, right? Perfect. The second thing is like how blockchain can provide our, a safe and security to these things. Sure. So blockchain can provide security safely to many applications. It can be like you're building any, blockchain-based supply chain solutions or blockchain-based, Aadhaar, any kind of things, right? So the users own the data, right? Like they are having the private keys, the access controls, anything, right? So in this way, the blockchain can help like safety and security of loads of data, and in blockchain, user is the owner and he controls everything. Perfect. So Deepika, you have worked with Maharashtra government, and can you just share your experience with our viewers which involves cyber fraud and how blockchain can help safeguard it even further? If you can just explain this to our viewers. So I was deputed to the Chief Minister's office, whereon my posting happened to the Maharashtra Cyber Police Department. There is where I got the entire span of the state's cyber ecosystem, which is covering a populace of more than 120 million plus people. There is certainly a coverage of a number of cyber labs, a number of police stations across. However, we still have a very long way to go in terms of our evolvement and in terms of catching up to the number of modus operandi that are, coming across. Once my stint was over there, I began my firm, especially focusing on the research base and the crimes that were happening on taking care of the various types of modus operandi, taking out the solutions for the same, the SOP for the same. And this is something that I see as the need of the hour, where the law enforcement, like regulatory authorities, as well as the masses, including the awareness firms such as the media as well, need to go hand in hand in order to educate everybody in order to take care or be aware or be safe from the kind of cyber crimes that are happening. To be very honest, whenever I have seen, and in my experience, I've trained more than 3,000 police officers and investigated more than 1,500 cases in terms of different types of FIR. Every time I see a particular FIR, 4 words come to my mind. Just if they were aware. All right. So if this awareness factor is taken on, this is something that, we'll be able to overcome very, very successfully. Awareness is the key word, which I've picked what Deepika is saying. What's your opening remarks? Yeah, I think cybersecurity is a very, very important aspect.
life has changed. If you look at the last 50 years, and in that also, if you see last 25 years, when internet was not there, right, there were not so much challenge around cyber security. It was always about security or physical security. But while we are entering the digital world, it is a new paradigm, cyber security, wherein organizations, governments, banks are always looking at how they can adopt better tools, better processes, better people, right, wherein they can, at the end of the day, safeguard citizens and the customers who are operating on these business models. And while we are today and Web 2.0, and tomorrow we talk about Web 3.0 and blockchains Exactly. and all, very, very important to see what more technologies we can really emphasize on a cyber security side. I think awareness is one of those keys. I think what people say, most of the fraud does happen because of some kind of a negligence, some kind of a process elapse. Almost 90% fraud does happen because of that. I think technology comes later. I think awareness is a fundamental key for avoiding cyber frauds. So my second question is to Preetham, being at Quality Audits and completed numerous smart contract audits, do you believe the blockchain industry is secure enough? What's your opinion on this? So blockchain, I feel blockchain, the protocol that you are building, right, is very secure. I feel it, right. But the products that we're building on the blockchain, like on Ethereum blockchain, on Polygon, or any blockchains, right. So while we're building any DApps on the blockchain, we should be taking care all the safety, like all the safety standards and everything, right. You can say blockchain is secure, but the products that we're building are not secure. And why they are not secure? Because the blockchain is, first of all, is very new. The language in which we are coding is very new, right? So there is no best experts, and like we don't know what can be the next attack vector, right? Like maybe last month there were Flashstone attack vectors. Or Beanstalk protocol. Yeah, any kind of rug pulls is going on, right? But we don't know what can be the next attack vectors on the blockchain protocols can happen. So the blockchain protocols are not secure yet because this blockchain is very new, and even the developers are very, very new to this language. So it's a very long way to go. So we will discuss the Beanstalk protocol in detail, but my next question is to Bharat sir is, UPI is such a groundbreaking implementation. So what have you learned, sir, from this project? If you can just explain this. And there are broader concerns as far as payment integration is concerned, which is going on between the RBI and the exchanges. So if you can simplify this process for our viewers, sir. I think UPI is always a matter of pride for we as a country, and I personally feel more blessed to work right from the concept to the rollout and the whole journey. So something close to my heart. But UPI, when we were conceptualizing UPI, cybercrime were at its rise, and especially India had seen a couple of incidents, and we also did good research about what's a worldwide issue about the cybersecurity. Right. Unfortunately, what happened at the time, UPI, again, as you rightly say, path breaking, but it's unique in this sort on way. I mean, it is nowhere in the world existing. So you don't have anything to benchmark, right? In case of card industry or payment industry, you have benchmark what is happening in the world, but UPI itself is a benchmark for the rest of the world. So while we thought that is a constraint, but we converted that constraint into something called blessing, because not having a legacy in technology is a great blessing. You can play around with whatever new technology available as on that day. You can do that. That is what exactly we did with UPI. And when we were developing or designing security, I must tell one thing about the role of security, which I believe that not yet very well digested by people. Security is something has to be there from day one when you start conceptualization. Right. You cannot add as icing on the top, icing on the cake at later stage, because then it's not security. One great lesson I must share with the viewers that in UPI, right from the day one, first time when we discussed about UPI type concept to the rollout, I and my team was fully integral part of everything what we did. So therefore, the security has been inculcated in the UPI platform right from the day one. That is point number one. The point number two is, in the previous question, we were debating about the cyber challenges and all.
with all responsibility, I can say that even in today, I think we have rolled out somewhere in 2016, and now roughly around 4-5 years in very effective implementation of UPI. I can vouch for the security of UPI in a way that there is no single major incident happen because of the technology loophole in UPI platform as of today. Absolutely. And touch wood, I would pray that it will go forever. However, fraud which are happening today are out of greed, out of fear, and out of ignorance. That is what the counting around 95% of fraud today worldwide. I would not say worldwide, but countrywide. It is out of greed, fear, and ignorance. There is no role technology is playing where frauds are reported. So that is second flip side of this. The third point is you said about the integration with the exchange and all. I don't want to get into that. Some exchanges were allowed, not allowed. That is separate. But look at the robust integration, which API based integration about all the PSPs and all other players, those who are connected with UPI. The security of all this API based integrations is so much so robust. That is what is paying price back today. Because security was never left or never afterthought or never unwanted baby in all this implementation. So Prasanna, few keywords is fear, greed, and integration. That's what Bharat sir has highlighted. What's your view on the UPI episode? Yeah, I think UPI is one of the greatest innovation we have seen in the last decade, right? So I think I've been part of initial conversations and the rollout from our bank side. And I do really agree with Bharat sir. UPI is a path-breaking ecosystem, and it's built on a futuristic architecture, which really helps to say that it's far more secure than any of those ecosystems. Any innovation is always treated as an innovation only if it is being utilized by the larger community, and UPI is one of those examples. You have seen last couple of years the way transactions are going on high and on UPI. A lot of use cases with the Google Pays, Phone Pays, almost WhatsApp banking is coming on UPI. I think it's one of the best innovation which we have seen at India, and the world is watching around UPI. World is asking UPI to come to their countries. We have seen examples like UAE or Singapore or Nepal. I think it's one of the path-breaking use case. And if you talk about a security of a UPI, far more secure compared to other ecosystems out there in the world. So hats off to NPCI team who has made it really possible for India for this path-breaking ecosystem, which is built on top of payment stack which we have at NPCI. I think that gives a lot of liberty for India to really make a great use case around payments. All right. So as we are talking about cyber securities and its broader concern, we have Preetham was highlighting something about the smart contracts and its implementation. Absolutely. What Preetham wanted to emphasize on, we can always say that blockchain is a path-breaking technology. It safeguards. It has its own benefits, like it is a single source of truth, and the smart contract is one of those phenomena. It makes sense that every system can be safeguarded with the blockchain, but ultimately it is a piece of code. Right. The way we have seen a standard code which are into web technologies like Javas or Pythons is another piece of code, right? And there is always a room for some kind of a hack. So what Preetham wanted to emphasize, before making any product or any use case live, it has to be undergone your QA, UAT. Apart from that, security aspect is very, very important. How do we audit that smart contract, right? Perfect. How efficiently you have written. There are some guidelines, and it's very, very important. Even if you are approaching blockchain as a security technology for your network or any of the use case, makes sense. You need to undergo some kind of a vulnerability test, penetration test, and smart contract auditing. Yeah. ऑफ क्रिप्टो। ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स की हर छोटी बड़ी हलचल की इंफॉर्मेशन, क्रिप्टो मार्केट्स के अप्स एंड डाउन्स की डिटेल्स, बिटकॉइन के घटते बढ़ते रेट्स,
और वर्चुअल करेंसी से जुड़े फन फैक्ट्स के साथ और भी बहुत कुछ देखते रहिए देखते रहिए क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो टीवी। क्रिप्टो टीवी माइंड। So as we're talking about smart contract auditing, my next question to Deepika is, why cyber security, is critical for the entire world. You have been working closely with the Mumbai police. What do you tell them, what to look forward and why it is critical as far as your training is concerned? So the first part is, in any physical or tangible attack, we are able to see who the attacker is. We are able to see the attack payload, the attack vector as well. However, here everything is so mystical and in a black box. Right. It becomes very difficult to attribute. The second part is that in cybercrime, there are no geographical boundaries and there is no kind of a demographic which is safe. To be very honest, the only okay advantage, I'm not even saying a good advantage, I'm saying the okay advantage of cyber is it's a great equalizer. Right from kids to adolescents, even senior citizens, and even educated people like you and me, once the newer adoption of technologies is happening, and to be very honest, post 2016-17, the pace has been very rapid. Perfect. The technologies have evolved. As Bharat sir said, the technologies are very robust indeed. However, most of these crimes, in fact, if I could attribute a number, at least more than 70% of crimes are happening due to a concept known as social engineering, where the weakest link here in the entire cybersecurity gamut is the human element attached to it. Perfect. Because of social engineering, people are collecting a lot more data points, and there is where majority of the information leaks are occurring. In fact, what I have seen the modus operandi 4 to 5 years ago is still being repeated in the same form or the other. And I am sometimes disappointed that even though we are hearing and listening different types of crimes on a daily basis, it's not that the papers are not publishing it or, shows like yourselves are not covering it. However, still the stance is such, and also the populace imbibing the same is important. Perfect. If we take the concept in India, UPI is one of the fantastic technologies, and we have got such features which the other part of the world is just dreaming about. For example, the automatic SIM authentication of only implementing UPI in the SIM card that already is there in the phone. It is very important to see on the security aspect, and other apps in the world are just dreaming about the same. Exactly. But despite that, there are a lot of elements where there is some money debiting or there is some defraudment that is happening. The second part is in terms of data or data get-in points that are coming towards right now. People are sharing, rather oversharing a lot of data information, which is resulting into far more attacks. Because let's say we talk about a particular employee working at XYZ Bank, he keeps on sharing about his personal life, and therefore thefts like identity, thefts like impersonation become very easy. So this is something that we need to take together as a society, and one needs to be more responsible about one's security and not depend that if something happens, the police or the other law enforcement will take care. So I think once a person is you can say a guardian of its own security and data, I think half of the problems, more than half of the problems rather, will be solved. So you very quickly, Bharat sir, you want to highlight on this aspect? I just wanted to add what Deepika said. So two parts, she mixed privacy and cyber security both together, but both are, in terms of a kind of input for committing cybercrime. So that's a good example. But if we have to compare the cyber security, why it is critical for the world, let me give a very simple analogy of the global economy. If something goes wrong in New York Stock Exchange or London Metal Exchange, the impact of that coming all across the world as far as economy is concerned. Cybersecurity, the next to that economy, which impact the world completely. Because, something goes wrong in one part of the world due to cyber attack can literally impact on your economy. It literally can impact on your day-to-day life. Because, the best example, Colonial Pipeline. I think how it has impacted to rest of the world, because, all of a sudden the prices, gone to much higher. But
apart from the cybercrime, which is 70% of cybercrime today worldwide, are mainly targeting to financial gain. The 30% are more dangerous than the 70%, because in the 70%, Right. you know, you are losing money. And I have investigated every big breach of the banking sector for last 1 decade. What we found that we found that who are the people behind, how they did it, but we couldn't go and check you know, where they are physically present, because there's a borderless world. But if we go beyond this financial sector, it is a larger risk for the nation's sovereign security, because you are fighting a battle with unknown enemies, and we don't know where they are. You know, in India, luckily, we have not seen the destruction created by cyber attack, but there are signals. There are signals like, look what happened at SBLC a few weeks ago in Ladakh. Look at what happened in you know, the Mumbai power outage. Look at what happened at the power plant. Look at what happened to Air India. And there are so many things. I mean, so many attacks in last 2 years. I can count it. That if you connect the dots, there is something a larger design, which can be a sabotage, which can be espionage, which can be a, you know, state-sponsored attack that can ruin the country. I will take 30 seconds more to tell. Look at what is happening at the Ukraine and Russia. The war, what our news channels are showing is physical, but there is a much bigger war being fought between both the countries in the cyberspace. They Right. have Sure. made enough destruction to each country. So that's where the cybersecurity is very, very critical for the world. So, Preetham, my next question to you is, you know, what role does blockchain play in the conceptualization and design of cybersecurity? If you can just touch base on this aspect. Sure. So like currently, like everything is going digital, right? And we are having so much data, right? Like after coming to Geo and like in whole world, there is so much data is every enterprise is having, right? So what are the current issues these enterprises or any products are facing, right? And how blockchain can help them, right? So in this current world or any current product, the data is siloed, right? Like and you can say the cybersecurity expert in any company or like anyone don't having a single view access of the data, right? Like they don't have a single access of data so that they can take the decisions what's going wrong with their data, right? So in this case, the blockchain can help, right? So in the blockchain, the data is not siloed. Like every participant having their own having their own data, and they can make the decisions, right? And in this data in the blockchain, like we are having the great transparency of the data, like what is going on, and like everything is very visible. But in Web 2, you can say like except blockchain, there is less transparency of the data, right? And in blockchain, we can say in the private blockchain, like the data is encrypted, right? And it is stored on like every ledger on everything, right? So it cannot be hacked easily. And we are having the access controls of the data, like which participants should be doing which transactions and everything like that, right? So just assume in India, in banking, there are so many frauds are going on and like so much things are happening, right? But if this kind of use case we are going to build on the blockchain, we can easily safeguard these use cases. Perfect. Like we yeah. All right, Prasanna, a quick view on that. Yeah, I think Preetham rightly pointed out how blockchain can be useful. If you go back and understand the fundamentals of blockchain, typically some of the concepts like cryptography or consensus mechanism, the way we had designed that particular blockchain protocol or blockchain product, and it works on a hashing, right? So how do we store the data in a current mechanism, so-called oracles and SQL server? It can be hacked and can be tampered. But the way we store the data in blockchain, it is always in a block. And if you have to really hack the data of last 1 year, you have to hack almost all the nodes and almost all the blocks out there, which is technically is impossible. So any use case you build it on a blockchain has this additional feature that data cannot be tampered, right? So although use case to use case basis, whether it is a network security or whether it is a multi-party data sharing, so those kind of a use case typically can come on blockchain, where it creates a transparent world for all the actors who are a part of that chain. Yeah. So my next question to you, Deepika, is, what do you think, India should do using this blockchain? Or let me put this in other way, you have worked with the state government, and what's your advice to the central government, what they should think as far as, using blockchain technology in context with the cybersecurity space? In fact, even before they start applying it or implementing it, I think they should first clear all the myths
and the doubts that are associated with the top round, especially in the policy and decision-making lobby that is there. To be very honest, right now, there is still a lot of demarcation that is still left. Fantastic. That is to be done between cryptocurrency, Well between blockchain as a technology. And to be very honest, the particular concepts of blockchain which are still misunderstood. Right. That is something that should be the step zero even before they start implementing. So you're saying that awareness, the government should be aware, or the awareness drive should be Not taken only awareness, but breaking a lot of myths. All right, To be okay. very honest, Perfect, today perfect. if you ask any minister or any politician, these are the people who are at the helm of decisions. up? Exactly. Absolutely. If you ask them what is blockchain, the next pack come reply, no, you mean Bitcoin, not blockchain. Fantastic. That's actually an interesting statement coming from a person who was closely Yeah. working with the government and everything. Was Prasanna, what's Yeah, your I view on think that? that's what I do agree with Deepika. Internet is a foundational technology, and it changes the foundation of the way we talk, the way we communicate, the way we do transactions, transportation. Everything today is on internet, right? Right, perfect. Similarly, blockchain is also another foundational technology, and Bitcoin crypto is one of those minuscule use cases. The way we see use case on internet like Paytms or any of those. Similarly, these are some of the use cases. We need to look at a larger value of a Bitcoin, larger value of a blockchain, which takes internet inabilities like trust, security to the greater level. But although there is a maturity cycle for blockchain also, but it makes sense that awareness, what are the use cases, Right. if any fraud does happen, how, as Bharat sir rightly said, right, it's all about there, right, how do you connect those dots among all those parties? So blockchain Exactly. brings that authority and bring that kind of ecosystem where you can connect all the dots from start to end. So And secondly, blockchain, because we have such vast populace of over a 1.45 billion plus people, what we have seen right now is the conceptualization across the country is still to happen, especially in the rural and the tier 2 areas. Now coming to the second factor of the implementation, we need to identify key areas of taking the applications to the smart city projects, right. to the cyber lab projects, to the policing projects that are still in the inception stage right now in the country, and also in the record keeping. Right now in India, a lot of schemes are associated with record keeping, documents, etc., in terms of benefiting the common man. However, right now we have seen that because of a lot of lacunae in the record keeping process, there is certain impersonations happening, there is a lot of cheating, frauds, etc. happening. This is something that will go away once land records or maybe even person Perfect. records or the Sure. person profile history or the DigiLocker system is put onto the blockchain process, which is not only encrypted successfully, but also available whenever needed. Fantastic. And second is the multi-level access and checkpoints that ensures that the data doesn't fall in the hands of the wrong people. Great. But also, in case it does, there is certain checks and balances already in place to make sure that nothing bad happens or nothing untoward. So Bharat sir, my next question to you is, as Deepika was highlighting about record keeping and a broader concern as far as cheatings and other frauds are happening in this space. So what are the best practices for implementing cybersecurity in blockchain projects then? If you can just highlight that. Well, so, way back 2010-11, when I implemented first real-time fraud monitoring system for NPCI, for entire ecosystem. So, it was purely static rule that, 1:3, 3:1, and, something like that. These have gone. I mean, today the way crimes are happening, be it, in payment system or be it in online, so many things, where you really do not know how to connect the dot because there is no unique identifier by which you can connect. Exactly. Let me give one example. I investigated one case where money shifted from one account and moved into 15 different accounts just in 17 minutes. Can you imagine that the gang was working so fast? Of course, thanks to UPI, they were transferring money so fast that 17 different account in just 50 minutes. On the 18th account, the money were withdrawn from day one. Now, how are you going to make sure that at the same speed you can identify where the crime? Because crime are inevitable. It is going to happen. All we are talking about how fast you can detect and how fast the moment you detect, how fast you can respond. Right. Blockchain will definitely going to help first to identify the such crime in real time,
And the moment it identify, because of the integrated way of its technology itself, today, let's say for my card is cloned. What I need to call to my bank and, hey, can you please block my card or something has lost somewhere. All this will get away because the blockchain chain, block-based technology. The moment you put some based on the kind of what you call adaptive learning, the way transaction is happening, based on the adaptive learning, based on the risk score and based on the circumstances, the system may be capable on its own to detect there is something fishy going on, and if they find something fishy is gone, the system will be capable to stop the transaction then and then itself. So Pritam, your quick thoughts on what Bharat sir was highlighting, as Deepika has already mentioned that there is a lack of awareness. If you can just touch base upon these facts as well. Sure. Like, what should be the best practices for cybersecurity for any blockchain project, right? So before that, I want to add one point to that. Like, what should be the Indian blockchain use cases, right? So like, there are some use cases I'm very interested in. The first is in the telecom industry, right? Like, currently I'm getting so many spam messages. If we can build a blockchain use case on like what message should be getting from Domino's or from like Flipkart or anything, right? So in that use case, Indian government is already working on it. The second is can be a single health ID, so that whenever I'm visiting any doctor to any city or state, like I can track my old data. Third, I'm very, very concerned about it, like currently what I'm eating, right? What foods I'm eating, what eggs I'm eating, right? So like, if there can be an organic laser on blockchain, I can scan and I can trace like from where my product is coming on, right? So that is a very interesting use case, and it is, I think, in future we are also focusing on what should be about our nature and everything, right? Like what we are eating, like is it what methods they are doing for any product, right? So I think these use cases are very interesting for Indian blockchain use cases. And what cybersecurity things we should be taking in the blockchain use cases. So currently, like we are helping many products in cybersecurity, right? So they are coming to us after development of the project, right? But in the cybersecurity, it should be from the first stage, right? Any product you are building, you should be working with any cybersecurity expert while you are building your architecture or your code, right? So they should take help in the first stage. And we have seen many use cases, right, in blockchain cybersecurity. Like maybe there are many smart contract hacks are going on, right? But there are so many social engineering hacks also, right? In one Indian product like EasyFi hack, that was around $60 million hack, right? So we should know what should be the best practices for keeping our private keys safe, how I'm using my MetaMask, everything, right? Sure. So there are many ways we can that we should follow. So Deepika, Pritam was highlighting about some messages which everyone get during a weekend. But there is one message I think so everyone must have got in this panel is you have won $1 million via lottery, and please contact me if you want to claim it. Give me your bank account details. So what is your view on this message? First, how to report it? Then third, what is your advice for our viewers? So in terms of reporting, these type of messages are only going to keep on growing and only going to keep on
being fine-tuned in order to be as real as possible. These messages are always appended with certain links, which were earlier only web-based links. Now they have become app-based links also, where it is very difficult to distinguish which is the real app, which is the fake one. And that is the kind of input that they have, gotten because of the kind of data that they have acquired from sending these en masse messages. Now, whenever we come to a reporting mechanism, there are a couple of helplines that the government has certainly launched. That's coming directly from the Ministry of Home Affairs. Fantastic. First is a Twitter handle known as @CyberDose, which keeps on publishing the current modi operandi of different types of websites, and that can be reached on Twitter. The second is a number known as 1930, which was just recently launched by the government in conjunction with the RBI as well, because most of these frauds are financial in nature. And third is a website known as cybercrime.gov.in. Of course, every state also has their own mechanism in terms of reporting local crimes, but the central repository on cybercrime.gov.in ensures that the current police station you want to target or the kind of law enforcement agency you want to target comes to the same. So what my advice to the viewer would be that to clearly mention whatever has happened without any fear, so that the authorities can understand how to investigate. So you must have also got the same message. Just to add, so what Deepika said, one line from my side, that the advisor to viewers is very simple. There is no free lunch. There is nothing coming free to you. Don't get into that trap. All right. Yeah, I want to go to the fundamentals, right? So why these messages are coming and why somebody is allowed to send those messages, right? Why can't we restrict the source itself? That's the one of the use case which telecoms has really implemented. I think any of those messages which are coming to the countrymen, or it's always filtered out a blockchain network out there. Now going forward, even if we are bringing a lot of regulations, lot of technologies to safeguard what we are doing, it's a part of a Web 2, right? So what we have built it on mobile apps or on websites or on those traditional database or traditional web servers out there, right? With the blockchain coming in to picture, we are going ahead with the Web 3, and there are many other technologies will come into our life. So regulations or controls which are, or awareness guidelines today we are defined, it's all about what we have seen in the larger scale on the web technology and mobile technology. Now with the blockchain and AI and other technologies coming together, our regulations will go down. Rather, it will enhance the moreover complete security of the ecosystem. Perfect. So I think that's how more of awareness kind of a work that will be at control at a network level or a blockchain level itself, and the challenge will be different while we enter into 5G or a different era, right? Fantastic. So that's what I always say is, if some technology comes, there is another technology comes to safeguard that technology, and that's the cycle continues. So as we are in the process of entering the 5G space, my next question to Bharat sir is, what are your thoughts on the Web 3.0 and the metaverse, in terms of security, and how do you think blockchain will gain momentum? And then we will throw this question to Preetham as well. So, as I take you from what Prasanna said, that if one technology is there, the second will come and safeguard that. I think that exactly will happen when we'll have Web 3 and metaverse, or in the 5G. However, the word of caution here is that when we were having 2G or 3G before that, we were having very comfortable life, because it was very limited to our own small world. Your bank, your customer, your ATM, your CBS, nowhere exposed. Now with this integrated world and the speed of data, and with million of new virus and Trojan coming every day, now you're moving to 5G. That will open Pandora's box as far as black hat people are concerned, because for them it is you are building a digital highway on which you will drive as a white hat, and at the same time black hat also will drive. How are you going to control them? Because the speed is one part, but the challenge is what it will emanate out of all this new innovation. Also to be think through much before ahead of time. Blockchain will definitely help, provided it has been understood by people. Because as I take what Deepika said, that the moment you ask somebody blockchain, oh my God, it's Bitcoin and cryptocurrency and all this, is a myth. How are we going to break that myth among the policymakers? Sure. That is the fundamental issue, right? And third is about the Web 3. Yes, I'm very, very bullish about Web 3, provided it has been
integrated in our day-to-day life, because Yeah. that is what is going to make Perfect. much difference on individual's life post its implementation. Perfect. Pritam, your quick take on that. Okay, so like how the Web3 and Metaverse things are going, right? So first of all, like Web3, we can say it is a third iteration of the internet, right? So in Web1, we were in like from 1990s to 2004, Web2 like 2004 to till now, and like now like Web3 is coming up, right? So the third iteration of how the Web3 is going to define, right? So Web3 is going to be going to build on more open source technology and utilizing the blockchain, more trustless and more Perfect. permission data, right? So what are the cybersecurity risks involved in the Web3, right? So in the Web3, in code is the money, right? In the code is the money, and in the code there are so many hacks are involved, right? And there is currently no regulation. There is no laws. Like if there is any a bug in code, anything, you cannot file a case against any person, right? So there are very interesting cyber threats in Web 3.0, and this coming to Web 3 space, it is going to be a mix of AR, VR, machine learning, and blockchain, DeFi, and NFT. So these things are going to make a very interactive and open source technology space. How can we prevent cyber fraudsters from acquiring private keys or gaining authorized access to users' MetaMask and for the matter any other wallet? If you can just highlight that aspect as well. So right now, in terms of the infrastructure of various types of wallets, we are seeing two types. One is the hardware, and second is the kind of cloud wallets that are there. In terms of data access, usually the social engineering element works very well here. And second, in terms of the storylining that these people usually use, this is a use case that we need to really adopt and kind of publicize as well, that these are the kind of waves your authorizations as well as your private and public keys can be at risk. So this is something that we need to focus on first. That is taking care of dynamic OTPs or maybe dynamic authorization concepts, so that nothing remains static and shareable as well. And second, keep your profiles as private as possible. Maybe also introduce a little bit of an air gap between two profiles, whichever has your funds or your savings on a little more private mode, and the public mode, which is more on a transactional level. And a second point which I want to add regarding the attacks on the Web 3.0. Web 3.0 has been publicized to see that there can be no one single master, because there's no one single or centralized database. It is completely decentralized. However, we are missing something known as a 51% attack. Right now, in a decentralized system, if one body impersonates and gets more than 51% of the kind of nodes that are available on a particular network, it is as good as gaining a centralized access. So I think we should definitely see all these concepts at the conceptualization, at the implementation level, as Peter mentioned. Try out all the stress cases so that nothing would be untoward whenever the actual implementation takes place. Thank you. So very quickly, if you want to add anything on this. Yeah, I think this 51% attack is a phenomenal thing. Typically, the way we define the blockchains, there are various consensus mechanism, proof of work, proof of stake, and there are many more innovations or acceleration as far as the technology maturity is concerned in last 3-4 years. While the challenge is there, I think technology always surpasses these kind of challenges. A 15% attack, it was always it is always there an opportunity for hack. But I think having those upgraded high-end network capacities, right? Although quantum computing is coming to our life, but while we reach at a quantum computing, these consensus and these algorithms will get more and more mature. That's how I look at this whole ecosystem. Yeah. Fantastic. So Pritam, my next question to you is very quickly, if you can just highlight or educate our viewers about how can we protect against cyber impersonation of the original website. Say for example, if attackers have obtained identical domain names and defrauded users, very quickly if you can just highlight that, how one can avoid this. How one can avoid, like just assume you are using Binance or like Wajirex, right? So now, like how these exchanges are helping, like whenever you are visiting on any website, so they are clearly showing this, like this is our address. So making sure that in browser you are logging through this address, right? This is the first step.
The second step is like whenever you are doing any transactions in like any exchanges or anything, so you should be following all kind of security factors. It can be 2FA, you're getting notifications on mail, OTP, and everything, right? And whenever like there are multiple ways, like also in the mail, I think there is very interesting thing nowadays coming. Whenever there is any mail is coming, either you can report it or report it to the exchange. I'm getting this kind of mails and everything. Like yesterday, I got one mail from Binance. Like the address was Binance. And something that when I opened this, the user was different, right? So we should be checking everything, which website you are visiting, from which address the mail is coming, and everything. So one last question, your closing remarks, Deepika, it's what influence will data protection laws have on persons' data in the near future going forward? If you can just give your closing remarks, Deepika. Oh, certainly. Data privacy and data protection laws right now in India is the current requirement and the necessity. Because what has happened, there are a lack of regulation in terms of intermediary liabilities that is now still not in place. In terms of also the foreign companies that have come here, set up bases, but not really sharing the data. I'll give you a small law enforcement perspective. If any defamation happens on Twitter or Facebook, they take minimum 14 to 30 days to even get back to the law enforcement. Okay. Imagine the plight of the victim who is suffering through that 1 month period. So this is something that we really need to enforce at all levels in terms of data privacy protection, as well as holding the intermediaries accountable. Once those are held accountable, it'll be very easy to share data and keep our data to ourselves. Thank you. Sure. Bharat sir, your closing remarks, do you think there will be more frauds in the near future? You highlighted about the 5G and the IoT of the things as well. Indeed, there'll be multifold increase in the cyber fraud, because earlier we used to go from home to office. Now office is at home. Your education is at home. That thanks to pandemic. But along with that, the way we have adopted the technology in our life, it is at the point of no return, and therefore we are exposing everything on internet, on cyberspace. Sure. And with the increased speed of 5G, IoT, metaverse, and all this, that is going to add the fuel. Only thing which is going to help us that how fast we can detect any possible cyber attack, and the moment you identify that attack or detect that, how fast you can respond to contain that damage further. I think that's the only key. Otherwise, will be always exposed to the cybersecurity challenge. And in our life, we need roti, kapda, makan as a basic necessity. I would add fourth, cybersecurity is also the basic necessity going forward. Fantastic. That's actually the basic necessity is roti, kapda and makan, and the fourth one is cyber security. That's a strong word, which is statement which is coming from Bharat Panchal, who has worked in this UPI industry and been working with the banking space for over a decade. Pritam, what's your closing remark on this? So my closing remark, like for the Web3 cybersecurity spaces, like hacks are going to be happen, right? So whenever you want to safeguard any product, you should be working with any cybersecurity experts, should be doing smart contract auditing, should be going through, blockchain kind of insurance things, should be monitoring all the transactions. Like as Bharat said, we should be monitoring all the kind of transactions. So we should take the actions for like what happened in my smart contracts. I can stop it, or I can stop my smart contract functions. Prasanna, your closing remarks. Yeah, I think a wonderful discussion today among all the experts, Deepika, Pritam and Bharat sir out here. In my view, I think we are at mid that while we are as a part of a Web 2.0, we are entering Web 3.0 in the next coming few years. It makes sense that restudy our processes, our infrastructures. Is there any room to really revamp those compliances and all those process documents, adopt new technologies like AI and blockchain coming together, which will safeguard our journey here onwards. I think digital identity will make a very important aspect with a consent mechanism where every individual will be owner of their own data, right? I think what is happening outside of the world with the GDPRs and many global data protection regulations are coming. I think India should also come up immediately and safeguard us or our citizens against those Googles or Apples. I think there are a lot of regulations these guys are also adopting, and one of the examples is third-party cookies, right? They are going to stop, but at the same time they will come up with another mechanism to have a trail of their customers.
So I think having a blockchain based foundation technology will really Sure. safeguard networks, because today we operate in a network era, right? UPI is one example, Aadhaar is another example. There are many marketplaces where our citizens, our customers are asking for those health services or banking services. So how do we safeguard this complete sharing economy is very, very important. I think blockchain is one of those foundation technology, and says that after 10 years we will not talk about me, but what is that you will talk about how we have safeguarded this whole ecosystem. Yeah. Fantastic. That's a very strong word, coming in from Prasanna Lohar, that how we will save our ecosystem. That's the point. Thank you so much, Bharat sir, for being a part of this panel discussion. And you spoke really well about, there are more frauds in this future with this, with the technology as it is going from 4G to 5G, and there are future prospects that frauds might increase. Preetham, you gave a very nice perspective about how this whole ecosystem is evolving as far as blockchain technology is concerned. Deepika, you gave a fantastic view as far as state government's approach towards this cybersecurity is concerned. And as usual, Prasanna Lohar, thank you so much for giving us and enlightening our viewers about how important cybersecurity is. Thank you everyone for being part of this panel discussion. This is Manoj Dara signing off from Crypto TV office. Thank you so much. Welcome to Crypto TV, world's first 24/7 streaming channel focusing on blockchain technology and cryptocurrencies. Download the CryptoWire app and subscribe to our YouTube channel Crypto TV to stay updated with latest trends in global crypto market, NFTs, metaverse, in-depth market analysis, and cutting edge of blockchain technology. Stay tuned. Hello and a very warm welcome to all the viewers of Crypto TV. This is Manoj Dara. So we have a very interesting company. It's Crypto Proof, and the management team is with me. On my left is Noam, and on my right is Aaron. Gentlemen, welcome on Crypto TV. Thank you. So Aaron, we will start with you. The initiative which Crypto Proof has taken, and what kind of projects you are working on, and can you just tell me something about your company to begin with? Yeah. So we started around a year ago. We realized that every individual who wants to interact with financial institutions needs to verify their assets. Or in order to get a mortgage, you need to prove that you have the cryptocurrency or your regular financial assets in your bank. And that can be very troubling and challenging for individuals and for financial institutions. So at Crypto Proof, we specialize in asset verification and allowing an individual to prove and verify their assets such that financial institutions can reduce their compliance risk in working with individuals and make it easy to onboard crypto onto their platform from user deposits, and also withdraw crypto onto other users in a safe, clean, compliant way. So it's a B2B platform or B2C? I mean, you cater to the customers? Yeah, we cater to the customers as a B2C, but most of our business happens with institutions on a B2B front. So if you're an individual who needs to verify your assets and receive a proof of funds letter, you can come to us. Right now we're available in the US, but we're soon going to be available worldwide. So since we are talking about Crypto Proof and the initiative it has taken, there is a broader concern about digital identity. So how Crypto Proof can, the measures the company will take, to address this issue? Yeah, thank you. So we, I think when we think about digital identity, people like the idea of anonymity. But even since the earliest days, when we were living in villages with 100 people, you had reputation, right? So we like to think about it as reputation. You had to know whether the baker was selling bread that you wanted to eat, or whether the butcher had good meat. And if he ripped you off, you wouldn't buy from him again. And the problem we see today in crypto is that people
continuously will do scams because there is no way of tracking true identity. So, you know, our solution really centers around being able to tie somebody's real world identity, passport, government issued, to cryptocurrency so that people know who they're interacting with and they know the assets are held by real people. So Andy, as of now, with how many countries you are working with? We're currently working with the US, so one country, but we're very soon to expand to Europe and India and Singapore and the entire Asian market. Oh, that's good to know. But there are a lot of hacks that are happening, you know, and we have seen Axie Infinity was also hacked. But if Axie Infinity, such an established player, can be hacked, there are a lot of concern as far as the retail customer is concerned. So how CryptoProof can can address this broader concern? Yeah, I think you should ask Aaron that actually, because he's in charge of all the compliance and security on the platform. Sure. As far as broader concern is, there are broader concerns in the cryptocurrency market. So how CryptoProof is trying to address these issues as far as digital identity is concerned? Yeah, so we make it very easy for financial institutions to measure verify and validate the identity of individuals. Sometimes we can receive some, like a passport photo and a selfie of an individual, but every institution will have different risk parameters. So for example, if you're going to a government office and you want to, let's say, order a birth certificate, they need to know exactly who you are. So the risk security is very high over at the government office. But if you're going to, let's say, I don't know, purchase something at a store and they need to know that your credit card is yours, that's a very low risk profile. So we give the tools to allow institutions, governments, and anyone who needs to evaluate risk when it comes to identity to make those determinations about how risky different situations are, and allow them to set up automatic measures and controls for those risks. So since we are talking about your company, can you just tell us, can you give us a ballpark figure of, how many assets you have verified as of now? Do you have a number? Yeah, so we verify around, we support around 2,000 different crypto assets amongst different financial equities. We currently have around 14 different integrations set up with various different exchanges and wallets. You can access us at cryptoproof.com in order to really see and play around with it and verify your funds. And every day we're adding more assets and more integrations with different exchanges and wallets. Can you just put a number to how many? What's the value of asset you have valued? Yeah, so the global market right now of all cryptocurrency assets is approximately $2 trillion. We can't disclose how much we've verified, but it's a significant enough portion of that $2 trillion chunk. Sure. And one last question, before we let you guys go, what are the other initiative which your company is taking as far as identity is digital identity is concerned, and how your company is working on the tech front, and what kind of investment you are looking to pump prime this initiative? Yeah, absolutely. I mean, I think we're very focused on being able to create the bridges between the off-chain and the on-chain environments. So that means being able to bring multiple different types of assets and really giving people a more full picture of themselves on-chain that represents their off-chain, and vice versa when they interact with institutions. So we really see a lot of banks and businesses looking to come on-chain and start interacting with assets. All right, that's it, gentlemen. Thank you so much for interacting with us. We hope that you find a lot of success when you come to India. Thank you so much for talking to us. Thank you, gentlemen. Thank you. हाय गाइस, मी वैभवी सावंत स्वागत करते तुमचं क्रिप्टो टीव्ही मध्ये. क्रिप्टो ॲसेट नेमकं काय आहेत, त्याचे किती प्रकार असतात, त्याचे फायदे काय आहेत,
हे आपण मागील एपिसोडमध्ये जाणून घेतलं. तर आज आपण पाहणार आहोत क्रिप्टो ॲसेट मार्केटमध्ये कोणकोणते महत्त्वाचे ॲक्टर्स आहेत. त्यात प्रथम क्रमांक आहे इन्व्हेस्टर, जे क्रिप्टो ॲसेटच्या दुनियेत सर्वात महत्त्वाचे ॲक्टर आहेत. म्हणजेच जी लोक वेगवेगळ्या क्रिप्टो ॲसेटमध्ये आपले पैसे इन्व्हेस्ट करतात. तुम्हाला माहित आहे का, सर्वात जास्त क्रिप्टो ओनर्स हे भारतात आहेत, म्हणजेच जवळपास 10 करोड एवढे. आणि ह्यामध्ये सर्वप्रथम 24 वयोगटातील तरुण मंडळी आहेत. म्हणजेच याचा अर्थ तुम्हाला कळत असेलच की तरुणाईमध्ये याचा जास्त क्रेज पाहायला मिळत आहे. दुसऱ्या क्रमांकावर आहे फायनान्शियल इंटरमिजिएटरीज, म्हणजेच आर्थिक मध्यस्थी. क्रिप्टो ॲसेटच्या मार्केटमध्ये जे दुसरे मेन ॲक्टर आहेत ते आहेत ब्रोकर आणि ॲडवायझर. स्टॉक मार्केट प्रमाणेच येथे सुद्धा ब्रोकर्स आणि ॲडवायझर्स ट्रेडर्सला क्रिप्टोमध्ये इन्व्हेस्ट करण्यासाठी ॲडवाइस करत असतात. तिसऱ्या क्रमांकावर जर आपण म्हटलं तर आहे ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म्स आणि एक्सचेंजेस. यामध्ये ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म आणि एक्सचेंजेसवर क्रिप्टो ॲसेटची होते जास्तीत जास्त डीलिंग. जगातील टॉप 5 एक्सचेंजेस आहेत बायनान्स, कॉइनबेस एक्सचेंज, FTX, कार्केट आणि KuCoin. आणि भारतात जर पाहिलं तर टॉप एक्सचेंजेसमध्ये कॉइनस्विच, कुबेर, वझिरेक्स इत्यादी आहेत. चौथ्या क्रमांकावर आहे वॉलेट प्रोव्हायडर्स. आपल्याला तर माहीतच आहे की क्रिप्टो करन्सी ही नेहमी वॉलेट्समध्ये स्टोअर केली जाते, मग ते हॉट वॉलेट असू दे किंवा कोल्ड वॉलेट. ग्लोबली जर पाहिलं तर भरपूर असे वॉलेट्स प्रोव्हायडर आहेत. फॉर एक्झाम्पल कॉइनबेस वॉलेट, जे बिगनर्ससाठी खूप चांगलं आहे. नंतर इलेक्ट्रियम वॉलेट, जे खास करून बिटकॉइनसाठी चांगलं आहे. त्यानंतर मायसेलियम, जे मोबाईलसाठी चांगलं आहे. नंतर लेजर नॅनो एक्स, हे ऑफलाईन क्रिप्टो वॉलेटसाठी चांगलं आहे. आणि शेवटी एक्झोडस, हे डेस्कटॉपसाठी चांगलं आहे. तर आपण पुन्हा वळणार आहोत क्रिप्टो ॲसेट मार्केटच्या ॲक्टर्सकडे. तर 5व्या क्रमांकावर आहे पेमेंट आणि मर्चंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर. यामध्ये क्रिप्टो ॲसेटचे बरेच ट्रान्झॅक्शन हे व्हिसा कार्ड आणि मास्टर कार्ड सारख्या पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडरच्या माध्यमातून सुद्धा करता येते. खरं तर यामध्ये क्रिप्टो ॲसेट डीलिंगसाठी मर्चंट सर्व्हिस प्रोव्हायडरचा सुद्धा खूप महत्त्वाचा रोल आहे. फॉर एक्झाम्पल कॉइनबेस, जे शॉपिफाय आणि WooCommerce सोबत इंटिग्रेट करते. बिटपे हे वन ऑफ द फर्स्ट क्रिप्टोकरन्सी पेमेंट गेटवे आहे आणि यावर भरपूर प्रकारचे वर्सटाईल पेमेंट ऑप्शन आहेत. यासारखंच कॉइनगेट सुद्धा खूप ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म सोबत इंटिग्रेट करत असतात. पुढे 6व्या क्रमांकावर जर म्हटलं तर आहे लिक्विडिटी प्रोव्हायडर्स. यामध्ये क्रिप्टो ॲसेट मार्केटमध्ये लिक्विडिटी प्रोव्हायडर्सची सुद्धा महत्त्वाची भूमिका आहे. तसेच हाय लिक्विडिटीचा अर्थ आहे प्राइस स्टेबल असणं आणि त्यात कोणत्याही प्रकाराचे चढ उतर नसणं. आता यामध्ये 5 लिक्विडिटी प्रोव्हायडर्स आहेत, ज्यामध्ये लंडन UK मधून FXCM Pro, मॉस्को रशियामधून B2 ब्रोकर, सायप्रसमधून लेव्हिरेट आणि लंडन UK मधून X ओपन हब आणि भरपूर सारे आहेत. नेक्स्ट 7व्या क्रमांकावर आहे मायनर्स आणि व्हॅलिडेटर्स. यामध्ये क्रिप्टो ॲसेट मार्केटमध्ये होणारी सर्व ट्रान्झॅक्शनला मायनर किंवा व्हॅलिडेटर्स अप्रूव्ह करत असतात. मायनर्स प्रूफ ऑफ वर्क फॉलो करतात आणि व्हॅलिडेटर्स प्रूफ ऑफ स्टेकला. निश्चितच आता तुमच्या मनात प्रश्न येत असणार की क्रिप्टो ॲसेटच्या ट्रान्झॅक्शनमध्ये कोण असतात आणि कोण कोण यामध्ये इन्व्हॉल्व होतात. मग चला तर प्रश्नाची उत्तरं आम्ही आपल्याला देतो. बघा, क्रिप्टो ॲसेटच्या ट्रान्झॅक्शनमध्ये 5 पार्टिसिपेंट असतात. फर्स्ट, युजर्स, जी लोक या लीगल एंटिटीज म्हणजेच कायदेशीर संस्थांमध्ये असतात, जे क्रिप्टो ॲसेट सोबत पिअर टू पिअर पेमेंट करत असतात किंवा गुड्स अँड सर्व्हिसेस किंवा इन्व्हेस्टमेंटचे परचेस किंवा सेल करत असतात. सेकंड, मायनर्स, ब्लॉकचेनवर होणारे सर्व ट्रान्झॅक्शनचे प्रूफ ऑफ वर्क कन्सेन्सस मेकॅनिझमच्या थ्रू मायनर्स हे व्हॅलिडेट करत असतात. यासाठी मायनर्स कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेअरचा अजून खूप जास्त प्रमाणात कॉम्प्युटिंग पॉवरसाठी वापर होत असतो. या कामाच्या बदल्यात
मायनर्सला नेहमी डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो ॲसेटमध्ये कॉम्पेन्सेट केलं जातं. थर्ड, क्रिप्टो ॲसेट एक्सचेंजेस. क्रिप्टो ॲसेट एक्सचेंजेसच्या माध्यमातून युजर्स आपल्या क्रिप्टो ॲसेटला फिएट करन्सीच्या बदल्यात किंवा दुसऱ्या क्रिप्टो ॲसेटच्या बदल्यात एक्सचेंज करू शकतात. या सर्व्हिसेससाठी क्रिप्टो ॲसेट एक्सचेंजेस हे फीस चार्ज सुद्धा करते. हे एक्सचेंजेस कोणत्या ॲडमिनिस्ट्रेटर सोबत संलग्न आणि स्वतंत्र असू शकते किंवा थर्ड पार्टी प्रोव्हायडर सुद्धा असू शकते. फॉर एक्झाम्पल Bitfinex आणि Carkid. फोर्थ, ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म. क्रिप्टो ॲसेट एक्सचेंजेसच्या ऐवजी ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म सुद्धा ट्रान्झॅक्शन फॅसिलिटेट करत असतात, जे अशा मार्केट प्लेस सारखे काम करत असतात जे वेगवेगळ्या युजर्सला कनेक्ट करतात. एक्सचेंजेस सारख्या या ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म क्रिप्टो ॲसेटला परचेस किंवा सेल नाही करता येत, तर फक्त त्याच्याकडे आपल्याला ट्रान्झॅक्शनला फॅसिलिटेट करत असतात. 5. वॉलेट प्रोव्हायडर्स. वॉलेट प्रोव्हायडर्स युजर्सला असे वॉलेट प्रोव्हाइड करतात जे क्रिप्टो ॲसेटची होल्डिंग, स्टोरेज आणि ट्रान्सफर्समध्ये हेल्प करतात. हे वॉलेट्स युजर्ससाठी प्रायव्हेट की होल्ड करत असतात आणि युजर्सला ब्लॉकचेन नेटवर्कवर उपस्थित पब्लिक कीच्या माध्यमातून क्रिप्टो ॲसेटमध्ये ट्रान्झॅक्ट करण्यासाठी मदत करत असतात. वॉलेट प्रोव्हायडर्स युजर्सची ट्रान्झॅक्शन हिस्ट्री अशा प्रमाणे मेंटेन करतात की जी रीडेबल असेल, जेणेकरून ट्रान्झॅक्शनची सिक्युरिटी राखली जाईल. वॉलेट प्रोव्हायडर सुद्धा दोन प्रकारचे असतात, एक हार्डवेअर आणि दुसरे सॉफ्टवेअर वॉलेट प्रोव्हायडर्स. वॉलेट्सला स्टोअर करण्यासाठी सुद्धा दोन पद्धती असतात, एक ऑनलाईन म्हणजेच हॉट वॉलेट आणि दुसरे ऑफलाईन म्हणजेच कोल्ड स्टोरेज. कधी कधी एक्सचेंजेस युजर्सची क्रिप्टोग्राफिक कीला सेफगार्ड करून कस्टोडियन वॉलेट प्रोव्हायडर्सला फायदा सुद्धा पोहोचवत असते. तर मित्रांनो, क्रिप्टो ॲसेट्सच्या खास प्रोग्राममध्ये सध्या एवढंच. मला आशा आहे की क्रिप्टो ॲसेटला घेऊन तुमच्या मनातल्या प्रत्येक शंकेचं आम्ही निरसन केलं असणार. क्रिप्टो विषयीचे अशाच प्रकाराचे नवीन टॉपिक्स आम्ही आपल्या समोर घेऊन येणार आहोत. तोपर्यंत पाहत रहा क्रिप्टो टीव्ही. बाय. These are not just the vows taken during the fairas in Hindu marriage ceremony or in any church. These are the vows actually taken on blockchain. And I have with me this cute couple who took the vows. I thought that, we could do something different. That would be fun, like having some digital avatar. I heard about this couple that did a blockchain wedding in the US. क्रिप्टो की किटी पार्टी में you're most welcome. And now you must be wondering कि यशी हम सब तो यहाँ हैं पर लेडीज कहाँ हैं? अरे पिछले एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कुछ और क्रिप्टो क्वीन से जो कि आपकी हेल्प करेंगी टू अंडरस्टैंड क्रिप्टो इन अ बेटर वे, राइट? इंट्रोड्यूसिंग कैथरीना फरेरा. इन्होंने 2017 में ब्लॉकचेन लेडीज नाम की इंटरनेशनल कम्युनिटी को स्थापित किया था, जिसका लक्ष्य दुनिया भर की क्रिप्टो स्पेस में इन्वॉल्व लेडीज को एक दूसरे के साथ कनेक्ट में लाना और सपोर्ट करना है. दिस क्रिप्टो क्वीन वेयर्स मेनी हैट्स, बाय द वे. ये ब्लॉकचेन बिजनेस कंसल्टेंट हैं, एक्सपीरियंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन ऑफिसर हैं, डिजिटल हेल्थ एक्सपर्ट हैं, टेक स्टार्टअप में मेंटोर हैं. इतना ही नहीं, एक राइटर और एक कीनोट स्पीकर भी है. लड़की एक है, रूप अनेक है, और ये सब कुछ इन्होंने घर के चूल्हे चौके के साथ में ही अचीव किया है. सो नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपसे कहे कि आप लोग घर में क्या काम करती हो, तो फट से कैथरीना फरेरा का नाम उनको बता देना और एग्जाम्पल दे देना. हाँ, कोई डाउट मत रखना.
ब्लॉकचेन लेडीज के थ्रू ये क्रिप्टो एंड टेक सेक्टर में जेंडर इक्वालिटी को एनकरेज करती हैं। इसके अलावा कैटरीना फेरेरा ने न्यूरेलिया नाम का ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है, व्हिच इज मोस्टली रन बाय वुमनिया। गेट इट? चलिए, क्रिप्टो स्पेस में एंट्री करने की इंस्पिरेशन तो मिल गई, ब्लॉकचेन लेडीज से दूसरी क्रिप्टो वुमेन भी मिल गई, लेकिन कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले क्या लगता है? रोकड़ा, पैसा, कैश, नकद, ये कहां से लाओगे? तो फिकर नॉट, इस कैश फ्लो की समस्या का हल मैंने ढूंढ निकाला है। नेक्स्ट क्रिप्टो क्वीन जो है वो हमारे देश की है, भले ही विदेश में रहती हूँ। इनका नाम है मानसी वोरा। वैसे ये जो क्रिप्टो क्वीन है ना, वो कोमोरेबी कलेक्टिव नाम के डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन की को-फाउंडर है, जिसे मई 2021 में एस्टैब्लिश किया गया था। ये वर्ल्ड का पहला इन्वेस्टमेंट डाओ है जिसका कंप्लीट फोकस फीमेल और नॉन बाइनरी क्रिप्टो फाउंडर्स को फंड करना है। डाओ मींस कंप्यूटर कोड्स के थ्रू स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से चलता एक ऐसा संगठन है जिसे कोई एक बंदा या फिर बंदी नहीं बल्कि पूरी कम्युनिटी रन करती है। मतलब जौनपुर से लेकर के सिंगापुर तक, इंडियन हो या फिर फॉरेनर, दुनिया की किसी भी कुड़ी को अगर क्रिप्टो और ब्लॉकचेन की स्पेस में इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स में तहलका मचाने के लिए फंड्स चाहिए तो उन्हें कोमोरेबी कलेक्टिव को अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि ये वुमनिया का इनिशिएटिव बाय द वुमनिया एंड फॉर द वुमनिया है। इतना ही नहीं, यूएस की इस देसी छोरी ने वुमेन इन ब्लॉकचेन नाम का एक एनजीओ भी स्टार्ट किया है, जहां औरतें एक दूसरे को ब्लॉकचेन और क्रिप्टो के बारे में एजुकेट करते हुए इंस्पायर, कोलैबोरेट और आगे बढ़ने के लिए एनकरेज भी करती हैं। बेसिकली मेल पॉपुलेटेड क्रिप्टो स्पेस की डिसीजन मेकिंग में वुमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ने की जबरदस्त पहल की है मानसी वोरा ने। ये थी अकॉर्डिंग टू मी 2021 की टॉप 5 क्रिप्टो क्वींस की लिस्ट। वैसे तो आज के ग्लोबल माहौल में दुनिया में किसी भी देश की लेडी की जीत पूरी विमेन कम्युनिटी की जीत होती है। बट बिफोर एवरीथिंग, आई एम इंडियन टू द कोर यार। तो अंदर से यही मन करता है कि अगली बार जब मैं आपके लिए ये सेगमेंट को प्रेजेंट करूं तो अपनी मिट्टी की खुशबू आनी चाहिए, है ना? और इंडियन कुड़ीज जो है वो धूम मचाते हुए नजर आनी चाहिए। ओलंपिक्स तो हर 4 साल में होते हैं, राइट? पर जब भी कोई इंडियन गोल्ड मेडल जीत करके आता है तो कैसे कलेजे को ठंड पड़ जाती है ना? 2021 की ये स्पेशल लिस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो मैंने आप लोगों के सामने प्रेजेंट की। 2022 की वुमनियास जो है वो अभी मेरा इंतजार कर रही हैं। तब तक के लिए watch out this space for more. This is me, Yashasvi Acharya, signing off. Thank you for watching Crypto TV. And do not forget to like, subscribe and hit the bell icon if you really want to know what's going on in the world of crypto. Ta-da! फेक, कॉपीड, फ्रॉड, स्पैम, कुछ ऐसे ही शब्दों में फंस गई है एनएफटी की दुनिया। अब अचानक एनएफटीज पर कई इल्जाम लग रहे हैं, जिसके चलते बड़ी बड़ी एनएफटी मार्केटप्लेस अब कड़ा रुख अपना रही है। ओपनसी ने खुद ये खुलासा किया कि फ्री मिंटिंग एनएफटी टूल्स के तहत लॉन्च की गई एनएफटीज में से 80% कॉपीड वर्क, फेक कलेक्शंस और स्पैम है। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यूं तो हर किसी के अलग अलग शौक, अलग अलग इंटरेस्ट होते हैं, लेकिन एक चीज है जो हम सबको अपनी उंगलियों पर नचाती है, जिसमें सबका इक्वल इंटरेस्ट है, और वो है पैसा, मनी, काचिंग। आपने नोटिस किया होगा आजकल हर तरफ सिर्फ क्रिप्टो करेंसी के चर्चे हैं। हर कोई उसके बारे में जानना चाहता है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, लेकिन किसी की भी एडवाइस पर क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि आप क्रिप्टो को बारीकी से स्टडी करें और फिर सोच समझकर डिसीजन लें।
इसीलिए हम आए दिन आपके लिए कोई ना कोई टॉपिक लेकर आते हैं और आपकी नॉलेज उसके बारे में बढ़ाते हैं। और आज हम बात करेंगे क्रिप्टो एसेट्स की। क्या आप जानते हैं कि क्रिप्टो एसेट्स क्या है? नो प्रॉब्लम। पिछले कुछ सालों में क्रिप्टो एसेट इंडस्ट्री ने गजब की तरक्की की है। ग्लोबली करीब 300 मिलियन क्रिप्टो यूजर्स हैं। इंडिया में भी ये आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन चंद सालों में ही इंडिया में 2 क्रिप्टो यूनिकॉर्न्स हैं। अरे ये यूनिकॉर्न नहीं, मतलब क्रिप्टो की ऐसी जायंट कंपनीज जो वेंचर कैपिटलिस्ट के मुताबिक $1 मिलियन से ज्यादा की वैल्यू रखती है। इतना ही नहीं, इंडिया में 350 क्रिप्टो स्टार्टअप्स भी हैं, जिसका साफ मतलब है कि क्रिप्टो ग्लोबली ही नहीं इंडिया में भी धूम मचा रहा है। धूम मचा ले धूम। Sorry, I got carried away. Okay, so we were talking about crypto assets. क्रिप्टो एसेट को अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हैं तो क्रिप्टो एसेट्स वो डिजिटल एसेट्स होते हैं जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को या फिर क्रिप्टोग्राफी को यूज करते हैं। क्रिप्टो एसेट को बेहतर तरीके से समझने के लिए आपको क्रिप्टो एसेट्स के डिफरेंट टाइप्स को समझना होगा। क्रिप्टो एसेट्स 6 टाइप के होते हैं: स्टेबल कॉइन, CBDC, privacy coins, governance tokens, utility tokens and non-fungible token। तो सबसे पहले बात स्टेबल कॉइन्स की। स्टेबल कॉइन्स ऐसी डिजिटल करेंसी होती है जो किसी फिएट करेंसी जैसे कि डॉलर एटसेट्रा या फिर किसी अंडरलाइंग एसेट से बैक्ड होती है, जो कि गवर्नमेंट इशूड करेंसी हो सकती है, गोल्ड हो सकता है, ऑयल हो सकता है या फिर कोई क्रिप्टो करेंसी जैसे कि बिटकॉइन। मतलब स्टेबल कॉइन के प्राइस में उतनी ही फ्लक्चुएशन होगी जितनी उसकी फिएट करेंसी में या उसके अंडरलाइंग एसेट के प्राइस में। फॉर एग्जाम्पल, एक X डिजिटल करेंसी है दैट इज बैक्ड बाय डॉलर, तो जैसे जैसे डॉलर बढ़ेगा घटेगा वैसे ही ये X स्टेबल कॉइन बढ़ेगा या घटेगा। नेक्स्ट इज CBDC यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है, ये सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी है। CBDC किसी कंट्री की ऑफिशियल करेंसी या डिजिटल टोकन होता है। फॉर एग्जाम्पल, चाइना की CBDC में अब तक $10 मिलियन की पेमेंट हो चुकी है। अगला है गवर्नेंस टोकन। कभी कभी कंपनीज इनिशियल स्टेज पर फंड रेजिंग के लिए अपने फाउंडिंग मेंबर्स को ICO मतलब कि इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स देती है। साथ ही इन मेंबर्स को वोटिंग पावर भी मिलती है। ऐसे कॉइन्स को गवर्नेंस टोकन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एज ICO यानी इनिशियल कॉइन ऑफरिंग्स एथर $0.31 पर बेचा गया था और अब एथर की वैल्यू ऑलमोस्ट $3,128 है। सोचिए इस पर ROI यानी कि रिटर्न और इन्वेस्टमेंट कितना भारी होगा। और अब बात नॉन फंजिबल टोकन्स की। नॉन फंजिबल टोकन्स कोई भी यूनिक आर्ट हो सकता है, जैसे कि कोई फोटो, पेंटिंग, ऑडियो, कोई एनिमेशन, गेम एटसेट्रा, जिसे बाय एंड सेल किया जा सकता है। लेकिन यहाँ ट्रांजैक्शन किसी क्रिप्टो करेंसी में ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने बीपल ये नाम तो सुना ही होगा। बीपल ने 13 सालों में बनाई अपनी पेंटिंग्स का एक कोलाज बनाया और इस डिजिटल पिक्चर को एज अ NFT सेल किया $69 मिलियन में। चलिए, ये तो आप समझ गए कि क्रिप्टो एसेट्स क्या है, लेकिन इसके फायदे क्या हैं? आइए वो भी जान लेते हैं। क्रिप्टो एसेट डबल स्पेंडिंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ऐसी प्रॉब्लम्स अक्सर अनइनक्रिप्टेड डिजिटल एसेट सच एज डिजिटल मनी से क्रिएट होती है, क्योंकि डिजिटल मनी के साथ फॉल्स ट्रांजैक्शंस और रिकॉर्ड्स बनाना आसान है, क्योंकि ये इजीली रेप्लिकेबल है और इनके हिस्ट्री ऑफ ओरिजिन को ट्रैक करना मुश्किल है। वहीं क्रिप्टो एसेट की सारी ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड्स ब्लॉकचेन पर अपडेट एंड वेरीफाई होते रहते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर है। इसीलिए इन डिजिटल एसेट्स को हर कोई ट्रैक कर सकता है। उम्मीद है क्रिप्टो एसेट को लेकर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अपने नेक्स्ट सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगी क्रिप्टो एसेट मार्केट में मेन पार्टिसिपेंट्स कौन है और क्रिप्टो एसेट ट्रांजैक्शन में कौन-कौन इन्वॉल्व होता है। Till then, it is me Ruchi signing off. Keep watching Crypto TV.
नमस्कार, मी संदीप कसालकर. क्रिप्टो टीव्हीच्या खास प्रोग्राम क्रिप्टो क्राइम्स मध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे. मित्रांनो, म्हणतात ना, अतिलोभ हा माणसाला विनाशाकडे नेत असतो. बस याच विषयावर आधारित आजचा एपिसोड हा आम्ही खास तुमच्यासाठी आणलाय. मित्रांनो, वेगाने वाढणाऱ्या तंत्रज्ञानाच्या या दुनियेत आता फसवणूक करणाऱ्या चोरट्यांच्या प्रमाणात सुद्धा वाढ होताना पाहायला मिळते. या चोरट्यांनी आता भारताची आर्थिक राजधानी म्हणजेच मुंबईत सुद्धा धुमाकूळ घातलाय. काही दिवसांपूर्वीच मुंबईतील चारकोप परिसरात ही घटना घडली असून तब्बल 1.5 कोटी रुपयांच्या क्रिप्टो फसवणुकीसाठी आरोपी जगदीश लाडी नावाच्या एका 23 वर्षीय मॅनेजमेंट ग्रॅज्युएटला चारकोप पोलिसांनी अटक केली आहे. चारकोप पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार जगदीश लाडी हा BBAचा पदवीधर असून तो 2020 मध्ये कोरोनाची महामारी सुरू झाल्यापासून ऑनलाईन ट्रेडिंग सुरू करायचा. दरम्यान आरोपी जगदीश लाडी हा लोकांना क्रिप्टो करन्सीमध्ये पैसे गुंतवण्याची ऑफर देऊन चांगले रिटर्न्स देण्याचे देखील आमिष दाखवत होता. आतापर्यंत जगदीश लाडी विरोधात 7 लोकांनी फसवणूक झाल्याची तक्रार दाखल केली आहे. या घोटाळ्यात अजूनही अनेकांची फसवणूक झाल्याचा संशय असल्याचे पोलिसांनी म्हटलंय. अधिक मिळालेल्या माहितीनुसार या तक्रारकर्त्यांमध्ये एक जिम ट्रेनर आहे ज्याने आपल्या सेव्हिंग्ज मधून एकूण 1.65 लाख रुपये गमावले आहेत. या ट्रेनरने जगदीश लाडीबद्दल 2021 मध्ये एका महिला क्लायंटकडून ऐकले होते की जिने लाडीसोबत गुंतवणूक केली होती आणि त्यावेळी त्याने इतर दोघांची ओळख देखील करून दिली होती. या दरम्यान जगदीश लाडीने ट्रेनरला दर आठवड्याला 25% रिटर्न्स देण्याचे आमिष सुद्धा दाखवले होते. ऑक्टोबर 2021 मध्ये जेव्हा ट्रेनर आणि त्याचा भाऊ चारकोप येथील एका क्लायंटच्या घरी गेला होता त्यावेळी तेथे लाडी देखील उपस्थित होता. त्याने त्याच्या फोनवर एक प्रेझेंटेशन दाखवले ज्यामध्ये गुंतवणूक केल्यास किती जास्त प्रमाणात रिटर्न्स मिळतील याबद्दल सांगितले गेले होते. लाडीने असेही सांगितले होते की त्याच्याकडे 3 कोटी रुपयांचा पोर्टफोलिओ आहे आणि जर का काही प्रॉब्लेम झालाच तर गुंतवणूक केलेली संपूर्ण रक्कम ही परत करू. ट्रेनरने अखेरीस त्याच्या बोलण्यावर आणि त्याने दाखवलेल्या पोर्टफोलिओवर विश्वास ठेवला आणि सप्टेंबर ते डिसेंबर 2021 दरम्यान जवळपास 1.65 लाख रुपये गुंतवले. सुरुवातीला लाडीने ट्रेनरला थोडे रिटर्न्स देण्यास सुरुवात केली. मग काही दिवसानंतर जेव्हा रिटर्न्स येणं बंद झालं तेव्हा तो ट्रेनर आणि त्याचा भाऊ लाडीला काही रिटर्न्स बद्दल विचारण्यासाठी फोन करायचा. तेव्हा तो बोलणे टाळायचा आणि नंतर त्याने फोन उचलायचं देखील बंद केलं. मग अखेरीस कंटाळून ट्रेनर आणि त्याचा भाऊ लाडीच्या घरी गेले तेव्हा त्यांना कळले की लाडी तिथून रफूचक्कर झाला होता. त्यावेळी लाडीच्या घराजवळ इतर गुंतवणूकदार देखील आले होते जे लाडीच्या फसवणुकीला बळी पडले होते. दरम्यान त्या ठिकाणी एका महिलेशी देखील त्या ट्रेनरची ओळख झाली. त्या महिलेनं सुद्धा 10 लाख रुपये लाडीच्या फेक क्रिप्टो स्कीम मध्ये गुंतवले होते. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार लाडी हा फ्रॉड एकटाच ऑपरेट करत होता आणि इतर कोणत्याही ट्रेडिंग फर्मशी त्याचा संबंध नव्हता. जेव्हा चारकोप पोलिसांनी लाडीचा पोर्टफोलिओ तपासला तेव्हा त्यांना आढळले की लाडी हा लोकांना त्याच्या स्वतःच्या खात्यात पैसे जमा करायला सांगायचा आणि नंतर स्वतःच्याच नावाने क्रिप्टो करन्सीमध्ये गुंतवणूक करायचा. तपासकर्त्यांनी सांगितले की लाडी हा सुरुवातीला त्याच्या गुंतवणूकदारांचा विश्वास जिंकण्यासाठी म्हणून त्यांना मध्ये छोटीशी अमाऊंट सुद्धा द्यायचा. नंतर हळूहळू गुंतवणूकदारांनी जास्त रिटर्नच्या नादात आणखी पैसे गुंतवले आणि शेवटी रिटर्न्स येणं हे बंद झाल्यामुळे गुंतवणूकदार हे अखेरीस अशा फसवणुकीला बळी पडले. तुमच्या माहितीसाठी लाडीने त्याची संपूर्ण प्रसिद्धी फक्त तोंडी म्हणजेच वर्ड ऑफ माउथ केली होती. अशी बरीच लोक आहेत ज्यांच्यासोबत लाडीने फ्रॉड केलाय. यापैकी काहींनी लाडी विरोधात तक्रार दाखल केली आहे तर काहींनी नाही. कारण काही गुंतवणूकदारांना अजूनही विश्वास आहे की लाडी एकदा तुरुंगातून बाहेर पडला तर तो त्यांचे सर्व पैसे परत करेल. मित्रांनो, या स्टोरीच्या माध्यमातून आम्हाला आपल्याला हे सांगायचं आहे की जास्त रिटर्नच्या नादात आपण अशा फसवणुकीला बळी पडत असतो आणि आपल्या आयुष्याची जी सेव्हिंग्ज आहे ती गमावून बसतो. म्हणून मित्रांनो, एक गोष्ट लक्षात असू द्या, बघा, क्रिप्टो करन्सी या आपल्या सर्वांचेच भविष्य आहे. या माध्यमातून तुम्ही करोडो रुपये देखील कमावू शकता, पण केव्हा, जेव्हा सतर्कपणा, अभ्यास आणि मार्केट रिसर्च केला तरच. तर मित्रांनो, क्रिप्टो जगतात होणाऱ्या अशाच प्रकारच्या क्राईम व स्कॅम स्टोरीज घेऊन मी संदीप कसालकर पुन्हा एकदा तुमच्या भेटीला येणार आहे. तोपर्यंत पाहत राहा क्रिप्टो टीव्ही. कहते हैं इंडिया में 2 ही रिलीजन है, पहला बॉलीवुड
और दूसरा क्रिकेट, जिनके लिए लोगों की दीवानगी सोच से परे है। यही वजह है कि बॉलीवुड स्टार्स और क्रिकेटर्स जो भी करते हैं वो सुपर हिट हो जाता है। तभी तो ये स्पोर्ट्स स्टार्स ऑन फील्ड जलवे बिखेरने के बाद अब ऑफ फील्ड भी अपने स्टारडम का दम दिखाते नजर आ रहे हैं। दरअसल मैं बात कर रही हूँ क्रिप्टो वर्ल्ड की लेटेस्ट ट्रेंड यानी NFTs की, जहां सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, रोहित शर्मा, दिनेश कार्तिक, सुनील गावस्कर और झूलन गोस्वामी ने अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी है। इनके अलावा और कई प्लेयर्स इस लिस्ट में शामिल होने की फिराक में हैं। NFTs की इस फहरिस्त में सबसे ऊपर नाम है सचिन सचिन सचिन, जी हाँ, सचिन तेंदुलकर का। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन के भी क्या कहने। कई रिकॉर्ड्स अपने नाम कर चुके सचिन लगता है NFT की दुनिया में भी नया रिकॉर्ड कायम करेंगे। सचिन की इस NFT कलेक्शन में क्रिकेट से जुड़े कई गोल्डन मोमेंट्स कैद हैं, जैसे कि रिटायरमेंट टेस्ट से जुड़ी कलेक्शन, ऑटोग्राफ्स ऑफ इंडियन टीम प्लेयर्स ऑन देयर मेडन टूर टू इंग्लैंड इन 1932। साथ ही 1983 की टीम का साइन किया गया मेमोरेबलिया भी इसकी शान बढ़ा रहा है। इतना ही नहीं, लेजेंडरी डोनाल्ड ब्रैडमैन के साइंड रेयर स्टैम्प्स और 1983 में इंडिया की वर्ल्ड कप विनिंग के बाद लता मंगेशकर के कॉन्सर्ट की रिकॉर्डिंग भी इस NFT कलेक्शन की शोभा बढ़ा रहे हैं। सचिन ने खास तौर पर अपने फैंस के लिए इसमें ग्लोबल क्रिकेट से जुड़े 23 आर्टिफैक्ट्स भी जोड़े हैं। सचिन ने इस प्राइसलेस NFT को रेव स्पोर्ट्स और फैनेटिक स्पोर्ट्स के एसोसिएशन में क्लिक फ्लिक पर ऑक्शन किया है। और अब बात उस क्रिकेट स्टार की जिसने लगातार 6 छक्के लगाकर हर किसी के होश उड़ा दिए थे। जी हाँ, जब युवराज सिंह का बल्ला बोलता है तो अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। ऐसे में फॉर्मर इंडियन ऑलराउंडर युवराज सिंह ने डिजिटल कलेक्टिबल्स NFT मार्केटप्लेस कोलेक्शन के साथ पार्टनरशिप कर अपनी कई पर्सनल और क्रिकेट मोमेंट्स को NFT के तौर पर दुनिया के सामने पेश किया। युवराज सिंह ने अपनी इस NFT के बारे में बताते हुए एक वीडियो में अपने फैंस का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने उनकी पहली गेंद से लेकर उनकी जर्सी टांगने के फैसले तक हमेशा उनका साथ दिया। अच्छे समय पर पीठ थपथपाई तो बुरे समय पर हौसला बढ़ाया। युवराज की जिंदगी के प्रेशियस मोमेंट से सजी इस NFT की बदौलत कोलेक्शन NFT मार्केटप्लेस अब किसी वर्चुअल म्यूजियम से कम नजर नहीं आ रही, जहां युवराज की जर्नी और प्रीमियम NFT कलेक्शन दुनिया भर के फैंस को अट्रैक्ट कर रही है। और अब बात नजफगढ़ के नवाब की। फॉर्मर इंडियन ओपनिंग बैट्समैन वीरेंद्र सहवाग का नाम सुनकर आज भी कई इंटरनेशनल प्लेयर्स कांप जाते हैं। अपनी धुआंधार बैटिंग के लिए जाने जाने वाले वीरू पाजी हाल फिलहाल में NFT बैंडवैगन में शामिल हुए, जिसके लिए उन्होंने NFT प्लेटफॉर्म रेडियो को चुना। रेडियो दुनिया का पहला फर्स्ट ऑफिशियली लाइसेंस्ड क्रिकेट डिजिटल कलेक्टिबल्स प्लेटफॉर्म है, जो क्रिकेटर्स के अलावा इंटरनेशनल लीग से भी जुड़ी NFTs में ट्रेड करता है। सहवाग ने रेडियो के साथ अपने पार्टनरशिप में फैंस के लिए अपने फाइनेस्ट क्रिकेटिंग मोमेंट्स से जुड़ी यादों को NFT का अवतार दिया। इस लिस्ट में ऑलराउंडर स्टार क्रिकेटर रोहित शर्मा का नाम भी शामिल है, जो कई खास मौकों पर अपने जबरदस्त बैटिंग अटैक से फैंस को अपना मुरीद बना चुके हैं। फैन क्रेज पर अपनी इस NFT कलेक्शन में रोहित ने 2019 ICC वर्ल्ड कप में जीते ICC गोल्डन बैट और अपनी फर्स्ट IPL हैट्रिक से जुड़े कई मेमोरेबलिया शामिल किए हैं। मेल डोमिनेटेड इस क्रिकेट स्पोर्ट में हमारी वुमनिया वुमनिया भी शामिल है। फीमेल क्रिकेटर झूलन गोस्वामी भले ही इन दिनों अपनी बायोपिक को लेकर सुर्खियों में है, लेकिन वो NFT वर्ल्ड में जोरदार सिक्सर लगाने वाली पहली फीमेल क्रिकेटर के तौर पर भी काफी लाइमलाइट बटोर रही हैं। क्रिकफ्लिक्स, रेव स्पोर्ट्स और फैनेटिक स्पोर्ट्स के सहयोग से लॉन्च की गई इस NFT में गोस्वामी की जर्सी के अलावा फैंस के लिए NFT के रूप में उनके क्रिकेट खेलने के दिनों से जुड़े कई रेयर और ऑथेंटिक क्रिकेट मेमोरेबलिया भी हैं। NFT वर्ल्ड में क्रिकेट की दुनिया के दिग्गजों की एंट्री यही खत्म नहीं होती, बल्कि इस लिस्ट में सुनील गावस्कर से लेकर जहीर खान, ऋषभ पंत, स्मृति मंदाना, शिफाली वर्मा, AB डिविलियर्स, शाकिब अल हसन और फैफ डु प्लेसिस जैसे धुरंधरों का नाम भी शामिल है। और वक्त के साथ इस फहरिस्त में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल